A very warm welcome to all of you and very good morning. Good morning and a warm welcome to all of you. This is the first meeting for the year 2024 and I wish you a very happy new year. May this year be very prosperous and happy for all of us. As you can see, we have a galaxy of star speakers with us today. And we have a very special sort of meeting today where we have a skit on GST surge, GST surge. So before we start the meeting, let me remind you to please put your phones on silent mode for the meeting. Now, I request you all to please stand at attention for the Institute motto song and the national anthem. Kindly stand in attention mode. Thank you. Please remain standing for the national anthem. Before we start the session, for the introduction of our speakers today, I would like to invite CA N.M. Jaisal, who's also a past convener and present member, and CA Ramdava, who's a present member. First of all, I thank Convener Mrs. Gadia to give me this opportunity to introduce today's faculty. First faculty of today, CM Manish Gadia. उनका परिचय देना यह है कि घर में किसी का परिचय करवाना नहीं ये रिक्वायर्ड है क्योंकि we want to give our gratitude. Mr. Manish Gadia, a visionary leader and a senior professional with a practice experience in the field of GST and adept of academic development.
an exemplary writer for journal and co-author of various books with the passion of inspiring professionals and students through imparting high and quality education. Professional experience. He is a chartered accountant in practice since 1997 and partner in GMJ and Company Chartered Accountant. He is specialist in indirect taxes, earlier in service tax, excise custom, and now in GST also. Books and publication. He has co-authored books, Statutory Obligation of Cooperative Housing Society, published by WRC, co-authored Handbook of Valuation and Handbook of EPC Contract, both published by Chamber of Tax Consultants. He is a regular contributor of WRC Referential, regular contributor of GST Referential, published by GST PAM, contributed articles of service tax in income tax review, monthly journal published by CTC, compiled the budget booklet published by Javinder for several years. Is a renowned academician and eminent personality with proficiency in delivering more than 500 lectures on service tax, GST, and ICSF, the regional conference, branches, and study circles, and various business organizations. He was the chairman of WRC in the year 2022 and his three-time RCM and well supported by Javinder Study Circle all the time. Because of that, I want to one of the supporter. With these few achievements, there are too many, but I don't want to take much time of you. I present before Mr. Manish Gadia, and before that, I request Mr. Pradesh Gandhi to come forward and present a memento as a token of love and affection from Javinder Study Circle. Now, second speaker, Deepak as Thakkar, a well-known speaker on VAT and now GST. His qualification is a BCom FCA practicing since 1984. Achievements: rendering range of services in the field of indirect taxes, assurance, transaction, and risk advisory. He stood first in BCom from NM College in 1981. He is a part-time lecturer at Chennai College of Commerce. He is the president of STPM, now GSTPM, of Maharashtra, Mumbai, in the year 2002-2003. He is the editor of Sales Tax Review in 2004-05. He was chairman of seminar and workshop committee of GSTPM in the year 2019 to 2022. He co-authored books published by WRC on amnesty scheme of Maharashtra, published and e-commerce transaction in GST published by WS. Guide on ambiguous audit, and he also co-authored the books published by STPM, State Material, Weight Class, short publication on various subjects of GST, VAT, and GST. And with this acknowledgement, now I present before you Mr. Deepak Thakkar. Before that, I request Mr. Kishore to come forward, present a memento on behalf of all of us as a love and affection. Third speaker of the day, C.A. Gilas Teravkar. He is MCOM, FCA, and he stood, he secured first rank holder in all standard from first to BCom. Lectures and representation on GST subject. He is
he is contributed to representation by WRC to of ICI and various CA study circle branches of WRC and Surat and branch bureaus. Work experience. He is a proprietor at Dheeraj Teraudkar and Company, provided advisory, compliance and litigation support service in the field of GST and VAT. With these two accomplishments, now I request Mr. Asimat Sancheti to present a memento on behalf of. Now I request Mr. Rahul Lala to introduce revenue speaker. Good morning, everyone. Gives me immense pleasure to introduce the galaxy of speakers, knowledge speakers here. First, I start with CS Sumit. He's a Podarite alumni. His core area of practice is indirect taxation, and he caters his services in consultation, assistance, representation before the tribunal, including due diligence. He has delivered lectures across various forums, including the WIRC, CPC, the GST study circles across India, and various trade associations. He's co-authored books and publications, namely booklet on the Union Budget Amendment proposed with indirect tax, handbook on the valuation, issues in EPC contracts, articles in various trade magazines. He was the immediate past chairman of the Indirect Tax Committee of the Chamber of Tax Consultants, and has also been a member of the GST and Indirect Tax Committee of the WRC. With this short brief introduction, I would request you all to please welcome Steve to me. My wisdom, we have you to welcome. The next speaker, CA Gaurav. He's the current RCM member of the WIRC for the term 2020 for the term 2020-25. He's a qualified CA and is a partner with IRA and Associates. He's a regular speaker at training events for tax officers, CA members, and industry associations. He's also the chairman of the IDD committee, the WTO and Foreign Services Committee, Corporate Law Committee, and members in Entrepreneurship and Public Services or WRC for the period 2023-24. With this brief introduction, I request you all to please welcome CA. I request CA Ayushali to please present the momentum. Last speaker for the day, Jhunj R. Doshi. She's a CA/CS and currently pursuing her LLB. She's a partner. She was a partner with MDK and Associates, and currently is the proprietor of BRD and Associates. Her core area of practice is indirect taxation. She's a co-committee member of the Borindi Central CP Study Circle of WIRC. She has delivered lectures on indirect taxation at various forums, namely PCS, study group and movements of Borindi Central CP Study Circle, CGAF, and also the WIRC of ICM. She's acted as a group leader at the residential literature courses as well. With this brief introduction, I will request you all to please welcome to I will request our podium member, the intend to please present the meeting. We can start with the session.
अच्छा उन्होंने बोला Nice to see you all. And JP Nagar, I also feel it is my home ground. And almost once in a year or 2 years, I have come here and discussed on a particular subject. So very happy here. Secondly, all the speakers, the introduction took so much time and all that, right? But don't worry, today's session is not boring to you. Today's session is enlightening you in a different way by a drama. So one hour drama will be there, and thereafter another 1 hour we will explain where we used or misused our powers of GST officers, GST investigation team. So with this, let me take you through our sketch. This is the 10th raid on GST. Earlier, successfully 9 concluded and too much revenue garnered. All characters, names, and units are fictitious. Any resemblance to a person or situation is purely coincidental. The story is fictional. The company is Honest Limited, headed by the businessman Mr. Shailendra. I request Shailendra to occupy the MD's chair. He is supported by his team member, the taxpayer, chartered accountant, Mr. Gadia. Please assist your businessman. Now with this, this company, Honest Limited, is raided by the GST investigation team by the intelligence officer, Mr. Dheeraj. Another intelligence officer, Ms. Vijay, along with the senior intelligence officer, Mr. Sumit, and deputy director, myself. Deepak. So, with intentional access, we will start with the search drama, and the second part with the discussion about the performance as well as the law. Each by JP Nagar Study Circle, who is collected by the artists themselves, दिवान आम के बैठिए पर दिमाग और आंखें खुली रखिए शेयर वन इन्वेस्टिगेशन यानी सर्च ड्रामा on silent hello 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 sorry good morning sir yes एक टिप्पणी है कंपनी बारे में कंपनी के नाम पे मत जाना सर उनके लिए कंपनी कंपनी नाम ऑनेस्ट रखा है ओके बाकी ऑनेस्टली कुछ नहीं सर ऑनेस्टली उन्होंने एक ही काम किया टैक्स नहीं होता उसके जाके सर्च पानी है रिकवरी करनी है दबा के तो आप बोले तो
तो GST से एक बार जाके सर्च वारंट ऑपरेशन ले लूं मैं। अच्छा, exactly. What's your सर इन्फॉर्मेशन ऐसा है, नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन ऐसा है सर कि एक पुराने एक्स एम्प्लॉय है, इनको उन्होंने निकाल दिया था, वो अपने पास आके इन्फॉर्मेशन देके गए थे वो दैट दे एंगेज विद लॉट ऑफ एक्टिवेशन, फेक आईटीसी दे रहे हैं, सबमिशन दे रहे हैं, बाकी तो हम बना देंगे, वो तो जो बनाना है आप लोगों को। homework कर लिया? हाँ हाँ होमवर्क हो गया Study कर लिया? यस 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 Fine. तो let us take the information. ठीक है सर। Fine, go ahead. जय सर। Yes. सर एक कंपनी के अगेंस्ट में सर्च वारंट का आपको ऑथराइजेशन चाहिए था। अच्छा। एक कंपनी है ऑनेस्ट लिमिटेड, यहाँ पे पंजाब सर, नाम बहुत प्रोक्टर रहेगा इनका, इसका काफी टैक्स इवेशन हो रहा है, दीपक सर से डिस्कशन हुआ था, या पचास नामा बोलना इनके पास में रिकवरी टारगेट हम सोच रहे 10 सीआर का रख रहे इनका, बस क्या कर रहे हैं नहीं, टारगेट बढ़ना चाहिए। कितना 15 करो 20। हाँ ठीक है सर। ठीक होगा ना आपका प्रमोशन, आपका प्रमोशन भी हुआ ना? आप बोलते तभी हमको लेके जाओगे साथ में, कितना थोड़ा मिलेगा इससे। ऐसा है क्या? ठीक है, तो आप आज इसका परफॉर्मेंस अच्छा करिए इसमें। ठीक है सर। हाँ? आप बोलते एक आध उठा के अंदर डाल दूं, और अच्छा, एनएस प्रोग्राम हुआ नहीं अभी तक ये साल में? नहीं तो अभी तो चालू है, साल से कर देता हूँ उद्घाटन है। हाँ, आज करवा लो। उसके बाद आएगा बाकी हाँ। अपना फिर। हाँ ठीक है, अगर आप बोलते हैं फिर इनको। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, आपका और तो दे सर। मैं कुछ आपको अपडेट कर रहा था, आप जो भी करते हैं प्रोग्राम कीबोर्ड अपडेट। यस सर, थैंक यू सर। दीपक सर इस में का लोगों तो आ गया सर वॉलेट में। ओके। यूएस चलते हैं साथ में, और किसका ले चले? कौन फ्री बैठा देख लो। बहुत बढ़िया धीरज क्या करते हैं? जैन सर, भाई रूटीन में सर व्हाट्सएप और फेसबुक। अरे क्या है वो, कभी भी काम बन गया ना, ऐसा क्या सर करता है? बोलिए सर, क्या करना है सर? चलो भाई थोड़ा अपना सामान वामान समेटो, टिकट अपना पूरा ले लो, यस सर। के पास जाने का रेड बांधना है वहाँ पर। डन सर। और एक अपने को लेडी ऑफिसर चाहिए, तुम्हारे से बात कर, बाजू बैठती है वो मैडम, वो यूट्यूब वाली मैडम। क्या कुछ काम करे? सर यूट्यूब पे रेड मूवी देखी। रेड मूवी नहीं करे? हाँ सर। देखिए अच्छे से। सर करना है तो देखना तो पड़ेगा ना सर। आज चलो आपको दिखाते, लाइव डेमो दिखाते हैं कैसे रेड बांधने का है। यस सर। आईडी वाईडी दे देना भाई अपना सबना। यस सर। सर ये आईडी कार्ड ये आईडी ये आईडी डिजिटल आईडी, हाँ एकदम ये अच्छा है, इससे ये डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रही है एकदम। मूवी में करना पड़ेगा। बट पंच को लेते हाँ एक फिटनेस के लिए सर, तो उसको ले लो सर, यहाँ पर देखो क्या आजू बाजू में साथी बैठा हुआ है इसका। को ले लो। हाँ सर, ज्यादा वो रिप्यूटेड को पढ़े लिखा है और उनको ज्ञान बांटते हैं बाद में फिर। हाँ, और अवेलेबल है। यहाँ पर देखते हैं कौन कहाँ है यार, कोई दिख रहे तो दिख रहे, कोई नहीं है। मुझे टाका है ना, उसको ले लो आप। हाँ टाका है उसको ले लो। अरे नहीं ऊपर ले लेते, आप तो सबको बैठे हैं एक साहब, यहाँ पर अकेले बड़े क्या कर रहे हैं आप पर? कुछ नहीं, आपका नाम राहुल जी, आपको गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प करनी है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, अच्छी दिन आपके लिए भी आएंगे, थोड़ा बस आधे घंटे का आता है, बस आपको फटाफट फ्री करेंगे, आधे घंटा काम 1 घंटे फ्री कर देंगे। अच्छा ठीक है ना, आइए सर, ये राहुल जी यहाँ पर अगर बगल में घूम रहे थे, इनको दे देते साथ में फिटनेस कार्ड और सब है। बनवा देंगे ना सर, नहीं होगा तो क्या करते हैं? फाइन। हाँ, नहीं है ना? Honest Limited, यस हम GST डिपार्टमेंट से आए हैं। ओके but let me go through the ID card at least. ठीक है। That's clearly please show me ID card. ये देखिए आपके एक सर्च वॉलेट है, आपकी कंपनी का ये, Yes. हाँ बस आपके एमडी का है, आप यहाँ पे क्या इनका कौन सी इसका रिवीजन, Yes. कौन सी इसका इनको, You can't see sir what share. ये ऑक्सफोर्ड का इनका रजिस्ट्रेशन है, ऑक्सफोर्ड में ये That's all digital. This is it. लैपटॉप बंद कर लो। सब बंद करो इनका, आपके एमडी का है, और इसका ओनर हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हो गया, हम तो जैसे है, ये आपके सर्च हो रहा है, अरे आप
आप बैठिए, आराम से बैठिए, आप काम बंद करो। जहाँ पे भी नॉन प्रॉफिट है आपको बिजनेस बनाएंगे हम, ठीक है ना? लगाना पड़ेगा। फिर सब पासवर्ड्स, लॉगिन सब ले लो, बैंक अकाउंट्स के ईमेल्स के सब देख लो, चेक करो, सब इंफॉर्मेशन गैदर करो। बताओ भाई पासवर्ड क्या बताओ जीएसटी का? एक भी फाइल छूट नहीं पाए। जीएसटी पोर्टल पासवर्ड लिखो। सर बोलो। फेक इनवॉइस है कैपिटल। क्या पासवर्ड है कि क्या और एक्सेल पे है? तुम्हारा नाम नहीं पूछा, फेक इनवॉइस पासवर्ड पूछा है। याद रहता है इसके लिए सीखने सर आप। ईमेल का पासवर्ड दो। देखो fraud@123 नहीं, आपको पहले बोला था नाम लिखा जो ऑनेस्ट है, नाम खाली फेक इनवॉइस डॉट का था। नहीं सर सिर्फ पासवर्ड रखना है। सब करना याद रहेगा ऐसे नहीं करना है। है। थोड़ा पानी पी लीजिए सर, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। आप पानी अच्छी पानी तो पीने के कोई बात नहीं। ये पानी पी लिए, इनको जरूरत नहीं पानी की। ये कौन है भाई? मैं दे रहा था थोड़ा ठंडे से। सर नहीं नहीं, आप बैठिए। आप यहाँ पर अंदर पहले अपना सर्च होगा, आपके पास जाने हमने बुलाया है, वो बाजू में ऑफिस है। सर्च करो, अंदर आए हैं बाजू वाले सी है, बाजू वाले से। आप अंदर आ गए हैं, आगे जा सकते हैं, आप बैठिए। अच्छा यही बैठ जाओ। हाँ, एकदम सामने बैठे कहीं जाएंगे नहीं आप। थोड़ा कुछ बोलेंगे नहीं और कुछ बताएंगे नहीं। बिल्कुल सॉरी। अरे भाई ये पेपर मिला है, ये आपका देखो तो क्या लिखा है, चिट्ठी का नाम लिखा है, हिसाब लिखा है, सर अपना ये ना? नहीं अपना नहीं है सर। अरे आपकी राइटिंग है? नहीं तो हमारा नहीं है पेपर, अपना राइटिंग करेंगे क्या पेपर नहीं करते हैं? आपका नहीं तो क्या हमारा है? तो आपको पता ये हमारा राइटिंग ही नहीं है सर, ये हमारे रिकॉर्ड पे ले लो, रिकॉर्ड पे ले लो। ऑफिस किसका है ये? ऑफिस हमारा ही है ऑफिस सर। यहाँ पेपर का है ना, जो यहाँ पर पेपर मिला वो आप ही का है फिर। सर कैश मिला कैश। कैश हमारा है क्या? नहीं कैश हमारा ही है सर। अच्छा कैश आपका, पेपर आपका नहीं। 25 लाख कैश। सर ये तो मिल जाएगा ना हमको, सरकार ने निकाला बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है इसकी। अकाउंट्स कब तक रेडी है? अकाउंट्स तो सर महीने भर से बाकी है। क्यों तो फिर सर 3 महीने का रिटर्न नहीं फाइल किया जीएसटी का सर। 2 महीने का नहीं फाइल किया। अरे दिसंबर तो ड्यू हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए। दिसंबर तो 20 तारीख सर आप एक करके पूछे ना, सब जन एक साथ पूछ रहे हैं सर। अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने का बाकी है ना। दिसंबर तो आ गया ना, खत्म हो गया। दिसंबर तो 20 तारीख को ड्यू डेट है ना। अरे तो मतलब लास्ट दिन पे जाओगे, बहुत बात बोले पोर्टल क्रैश हो गया आपका। कैसे कैसे करो? वो आपका टू भी 12 तारीख को दिखता है तो मैं कैसे कर दूं 7 तारीख स्टीफन भी अपने फाइल नहीं किया है। को? वो 11 तारीख का ड्यू डेट है ना। हाँ तो आखिरी दिन भी बैठोगे क्या? अरे चुप बैठो, जब पूछे तब जवाब देना। सॉरी सर। आप सामने से कुछ पूछना नहीं। आपके लैपटॉप का पासवर्ड दीजिए, आपका लैपटॉप खोल के बताइए, आपका ईमेल खोलिए, पर्सनल ईमेल सब दीजिए हमको एक्सेस यहाँ पर। पर्सनल फ्यूचर बिजनेस का आप देख सकते हैं, पर्सनल आप अपनी राइट में। आप पर्सनल ईमेल बिजनेस करें तो हमको क्या पता? मेरे पर्सनल चालू की करेंगे। आप चालू कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काम में ऑब्स्ट्रक्शन के रजिस्टर कर आपको चालू कीजिए। हाँ डेटा चेक करो। बैंक का ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी दे दो। ट्रांजैक्शन पासवर्ड को देना है। अपना फिर भी पैसा निकाल लेगा फिर। अरे ओटीपी तो आपका आएगा ही ना, कोई बात नहीं है, दे दीजिए। फोन भी सीज कर लिया है। आप ही का है वहाँ पर। सर मैं खाली सीए को फोन कर दूं क्या हमारे वो आ जाएंगे? कौन है? मनीष जी गाड़िया एक्सपर्ट है। लगाओ लगाओ, फोन लगाओ, स्पीकर पे बात इधर लगाओ, हम भी देखते कौन है। बहुत तरीका आता है। है बोल। नहीं सर घंटी जा रही है। सर पेमेंट नहीं किया हमको सीए को, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है टैली में। मैं आपको बोलता हूँ सीए को हमेशा टाइम पे पे करना है। तो 2020 का पेमेंट किया, 3 साल से बाकी है। सर आप अरे इनको कर सकते हैं। तो मांगा ही नहीं, अपन ने क्या देंगे, बस उसको मांगना चाहिए ना। अरे वो डर गया नहीं तो क्या, आपका काम तो बनता है पेमेंट करने का। इधर जितना नोट करो, वेंडर पेमेंट भी नहीं करते 180 दिन में। चलान में एड्रेस ऐसे लिखा कर दो, दिया मैंने। बता दो चलान बना दो पोर्टल पे। क्या बोल रहे हो? जेबी नगर में सेमिनार में हो? ठीक है सर। सब लोग बोल रहे हैं जेबी नगर में सेमिनार में गए, बाद में करेंगे।
हमेशा सेमिनार में रहते हैं सर। आपको बताइए सर, इसका डेटा एक काम करते हैं, आप यहाँ पर चालू लोग के साथ में झोपड़ी हवा बोलते हैं, तो घर पे जाना चाहिए। हाँ घर पे जाते नहीं हैं। सर, आप घर पे नहीं जा सकते हो, घर हमारा रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है जीएसटी में। अच्छा, एक काम करो, आपका आधार दो, इनका आधार डिटेल, घर का एड्रेस को इनके घर में सर्च मारने के बहुत बोलता है ये। सॉरी मैडम, जा सकते हैं आप, बोल दिया अब इसने तो कैसे जाएंगे। अरे ये सर्च वारंट में बताओ एड्रेस है घर का, बताओ घर का एड्रेस तो तुमने बोला ही नहीं, घर का एड्रेस भी है। ये देखो, इतनी जल्दी जल्दी दिखाया, सिर्फ नाम पढ़ा है और साइन करवा लिया। आपकी वाइफ डायरेक्टर है ना कंपनी में? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, रिलेटेड कंपनी में है ना डायरेक्टर। अब वो दूसरी उसकी अलग उनको कंपनी उनको भी समझ के दिखाएं कि आपकी ईमेल और चैट। मैंने बस चेक मत दिखा। सब एविडेंस दिखा देगा वहां पर, काफी अच्छा दिया। देखो शैलेंद्र, घर पे ले जाओ और कोऑपरेट करो बराबर। अरे धीरज, और धीरज, अरे सर देखो वी आर कोऑपरेटिंग ना। यस, देखो विटनेस भी बोल रहा है सर सर। ये वाला देख लो ना। तो हमने कहाँ प्रेशर किया आपको। धीरज, Yes, sir. एक भी कोना छूटने ना पाए घर का, सब सारा सीक्रेट इनका निकालेंगे अभी तो। पर लेकिन घर पे सर आप डॉक्यूमेंट तो देखना है ना, डॉक्यूमेंट तो सब ऑफिस में है। हाँ वो घर घर पे चेक करेंगे हम क्या है नहीं, सब सर चेक वो करेंगे। एक मनीष जी का ईमेल आया हुआ था ना कि हाँ वो निकाल के दिखाओ, ईमेल दिखाओ। सर्च खाली सेक्रेटेड डॉक्यूमेंट के लिए होती है सर, वो एक्सपर्ट ने बोला हुआ है हमारे। अच्छा, मैं बैठ अब घर पे जाओ। आपके एक्सपर्ट क्या बोलते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, हम जीएसटी लॉ जानते हैं और लॉ तो हम ही बनाते हैं। और आपको सीक्रेट अकाउंट हम लोग ढूंढ के निकाल दे, डोंट वरी। चलो चलिए चलिए घर चलिए इनको लेके। मैं इधर चेक करो, आप पेपर दीजिए आप, फाइल की तरह आपका प्रोसेस। शैलेंद्र जी, आपको बताता हूँ, ये दोनों ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं बहुत बार इनके पास रह गया है। तो मैडम एडजस्टमेंट जो भी है सीधा सीधा बोल दो और हाँ। भर देते हैं। तुम बात मत करो यार, वी आर ऑनेस्ट। हाँ ऑनेस्टली बताओ कितना भरोगे अभी? अभी चल रहा ऑफिस, लाइब्रेरी में सर्च करो इनका, ढूंढ के निकालो क्या क्या माल भर के रखा है यहाँ पर। सर ज्वेलरी मिला है सर। लेके आओ इधर, आगे लेके आओ। कितना इतना बड़ा बैग कितना किलो है? ये कम से कम 4 से 5 किलो है सर। अरे बाप रे, 4 किलो ज्वेलरी क्या कर रहे हैं आप? तो स्त्री धन है। श्रीधर, हाँ। कितनी स्त्रियों का धन आपके पास? कितना? स्त्री धन तो रख सकते हैं, हमारे इस्लाम का एक महज वगैरह ये हमको बताया था। क्या एक से ज्यादा स्त्रियों का धन रखी है कि एक से ज्यादा स्त्री रखी है? आप टच नहीं कर सकते। आए उसमें भी लिमिट है, 500 ग्राम का लिमिट बताया कि नहीं महेश जी ने? सर ये देखो, जाने दो ज्वेलरी, ये रुपया भी क्या मिला है। है? कितना है? बच्चे के लिए तो कैश भी है। देखो देखो कितना है? 15 लाख तो दिख रहा है सर। अरे आप घर चलाने के बाद जेबी लेकर चला रहे हैं आप? सर ये सब अकाउंटेड है कैश। अकाउंटेड है? यस सर। ये पर्सनल कैश का बुक्स में अकाउंटेड है आपके? पासबुक्स में। सर पर्सनल बुक भी अलग से मेंटेन करते हैं आप? जीएसटी नंबर दिया पर्सनल नाम का? पासबुक में जीएसटी की जरूरत आप नहीं तो है। नहीं है तो अकाउंटेंट नहीं हमारे लिए, तो ऐसा नहीं सकता है। सब जोड़ लेते हैं सर, जब जोड़ लेते हैं एक बार सर को कॉल करो, किचन दिखाओ चलो। किचन में पूरा चेक करो, हाथ लेके तो दाल के दो सब पे चेक करो, बेड बेड का सब फाड़ दो, पूरा सोफा फाड़ दो, चेक करो पेपर कहाँ घुसा के रखा है इन्होंने। शैलेंद्र जी नाश्ते नहीं बनाए चाय देखिए ना, चाय नाश्ता तो क्या चाय नाश्ते की बात कर रहे हैं आप? हम सीधे साधे लोग हैं, हम पूछ रहे थे ऑफिस से आ रहे हैं, दोपहर रुपये कुछ चलेगा। क्या चले, मतलब क्या आपका? चाय पानी। चाय पानी गवर्नमेंट ऑफिसर का चाय पानी ऑफर कर रहे हैं? कुछ नहीं लेंगे ना, मैं तुमको धीरज तुमको भी चाहिए था, क्या नहीं लेंगे तुमको? ठीक है चलो आ जाओ, ढूंढो अच्छे से। वैसे शाम हो गया, ना खाता है ना खाने देता है। धीरज बिना के पेपर में कुछ नहीं नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं सर, भाई ये 2 ही चीज मिला है सर, कैश और ज्वेलरी। पेपर अग्रीमेंट कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कहा सर, चुका मैंने बोला ही था डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है घर पे, आपने माना ही नहीं। लॉकर में। अच्छा हेलो दीपक सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, घर पे इधर पूरा सर्च तो हो गया है। हाँ इनके पास ज्वेलरी मिली है, हाँ। स्त्री धन बोलते हैं 4 किलो, पता नहीं कितनी स्त्रियों का धन है इनके पास। उसमें बार है क्या? नहीं बिस्किट विस्किट वो सब तो नहीं मिला सर, ज्वेलरी टाइप की है ऐसे, चेन है, नेकलेस है, ये बैंगल है, इयररिंग है, डायमंड स्टडड पूरा हुआ, वो लगता है भारत डायमंड बहुत बंद हुआ था यहीं पे इनके घर पे खुल गया है। तो क्या सजेस्ट क्या कर रहे हो? नहीं ज्वेलरी तो है सर, 4-5 किलो करीब करीब है, हाँ। और कैश भी मिला है। कैश कितना था? 15 लाख। 15 लाख कैश मिला है सर। घर का बोलते पता नहीं घर चला रही है, मोहल्ला चला रही है। ओके, तो एक काम करो,
दोनों चीज का लेता हो सर? नहीं, एक काम करो, ज्वेलरी का पूरा लिस्टिंग कर लो, हाँ, फिर देखते हैं क्या करने का, और कैश जो है वो यहाँ ले आओ। कैश ले आओ एक बार। ठीक है सर। क्या बोले, सोना लेके जाना है? नहीं नहीं नहीं, ज्वेलरी का पूरा इन्वेंटरी कर दो इधर पूरा, अच्छे से इन्वेंटरी पूरा आइटमाइज कर दो उसको। कैश किसका ले जाओ ऑफिस में, आप सर बताएंगे आगे इंस्ट्रक्शन क्या करना है उसको। कैश ले दो, ज्वेलरी छोड़ दो, पॉकेट में रखा नहीं ना कुछ। नहीं नहीं, जरूर नहीं। भीतर यहाँ पर ऑफिस पेपर सर्च हो गए पूरे? हाँ सर, मिले कुछ पेपर्स। क्या है ये? सर पहले वो ना स्टाफ कब से रिक्वेस्ट कर एक मिनट, वो सीसीटीवी कैमरा। अरे धीरज, यस सर। वो बैकअप लेने का हार्ड डिस्क लेके आएगा उससे? तो घाई घाई में रह गया सर ऑफिस में। रह गया क्या? हाँ सर। एक काम कर, सुन, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क होगा इनका, वो निकाल दे, सर। उसमें डेटा ओवर कर दे, चढ़ा दे। सर आप सीसीटीवी बंद नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, सर्च में सीसीटीवी बंद नहीं करवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बात उनकी बात बता रहा हूं, सुनो, सीसीटीवी का स्विच ऑन रहने देना, खाली हार्ड डिस्क निकालना। बात तो उनकी हो जाएगा सर, मेरा रिकॉर्डिंग तो चालू है। चालू है ना जिसने अरे नहीं नहीं, सुनो सर सुनो, आप ऐसे सब नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं, अरे नो, स्विच भी ऑन रहेगा, रिकॉर्डिंग बटन भी ऑन रहेगा, खाली हार्ड डिस्क निकालना है। सर आप सीसीटीवी थोड़ी बंद करवा सकते मेरे ऑफिस के। विटनेस आपके सामने बोला था मैंने, बंद नहीं होगा सीसीटीवी ना रिकॉर्डिंग बंद होगा। चालू है, चालू है। चालू है। देखो मेरी टीम अच्छा काम कर रही है, करने दो उनको। आप पैसा भरने को तैयार है? अरे बिट्टे आप देखो, आप कितना पैसा भरने को तैयार है? कोई लाइबिलिटी तो बताइए मेरे को, मैं कैसे भरूं पैसा? कुछ रहा है ये। अरे सर, आधा घंटा बोला था, 4 घंटे हो गए। अरे अब भी हो जाएगा, बस 10 मिनट का काम है, आराम से बैठिए। अरे ठीक है, चाय चाय पानी मंगवाओ भाई, इनको पिलाओ, लीजिए आप आराम से बैठिए आप सर ऐसा। मेरा भी 6 बज गए, खाने का टाइम हो गया, मैं मना नहीं, वो सब हम देखेंगे बाद में। सर वो स्टाफ को तो जाना रिक्वेस्ट करें कब से नहीं फिर वो अभी क्या करें सर, सनसेट हो गया, अभी इनका खाना देते हैं। तो एक काम करो, उनके बैग वैग चेक कर लो, उनका नंबर ले लो सब। इसकी फोन पे आपको चिंता क्यों है? उसका खास प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो नौकरी छोड़ देगी इसलिए बोल रहा हूँ, आदमी मिलता नहीं है आजकल। आपका बैग देखिए, चेक करिए। अच्छा बुलाए कब आया डिपार्टमेंट? हाँ, आपको कल कॉल आएगा तो आपको आना है, बाहर किसी को कुछ बताना नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ या क्या हो रहा है, ठीक है? आप किसी को कॉल नहीं अरे जाके सीधा खाना बनाना, खाना पीना, सो जाना है। करें, समझा? ठीक है, कल ऑफिस आना है? आएंगे, पहले हम जाएंगे फिर वो आएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, हाँ हम जाएंगे। सर ये स्टैम्प पेपर मिला है, ब्लैंक स्टैम्प पेपर 2020 का। ब्लैंक स्टैम्प पेपर क्या कर रहे भैया? ब्लैंक स्टैम्प पेपर नया तेगी बना देंगे यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, सर ये एक और तेगी स्कैम, 2020 का है ना, हाँ, दुबई वाला ट्रांजैक्शन के लिए अपन ने दुबई वाले के लिए। क्या दुबई वाला? क्या कर दुबई वाला? दुबई में एक सर हमारा क्लाइंट आने वाला था, हाँ, उसके साथ एक एग्रीमेंट होना था। हाँ वही बाद में वो हुआ नहीं ना एग्रीमेंट। बाद में अग्रीमेंट में हवाला को घुमाया आपने। अरे हवाला हम करते नहीं सर, बोला ना आपको यार हमने। अब बता नाम से घुमा दीजिए हमको। ए भाई, आपका अग्रीमेंट में कैंसिलेशन अग्रीमेंट दिखाइए। ये मैंने अरे एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, कैंसिलेशन कैसे होगा? कैंसिलेशन तो होना चाहिए ना कम से कम। अरे अग्रीमेंट साइन किया, कैंसिलेशन अग्रीमेंट दिखाइए हमको। कैंसिलेशन है ही नहीं क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, तो हवाला घुमाया आपने। सर मेल में तो कुछ दिख नहीं रहा था, इनका कुछ एग्रीमेंट कैंसिल हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा इन्होंने डिलीट कर दिया, वो तो हवाला घुमाया है ट्रांजैक्शन, ये हवाला वाले है। सर बुक्स में भी बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं सर। इधर एक काम करो, ये सर, वो तो कॉलेज अपडेटेड वाला नहीं मैटर था। है, तुम्हारा चाचा है ना वीडियो में? यस मामा 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 है ना, यस इनको बताओ जरा, वो भी आएंगे यहाँ पर, डन सर। इनका एनफोर्समेंट का मैटर बनाएंगे अभी। हम यहाँ से टिप दे देंगे उनसे। सर वो बुक्स में तो एडजस्टमेंट एंट्री मारनी बाकी है 2 महीने की। एडजस्टमेंट अरे एडजस्टमेंट नहीं, एंट्री बाकी है। मतलब सर वो 990 के इम्पैक्ट लेने ये वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं सब। अरे सर सर एडजस्टमेंट एंट्री मतलब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सर। अकाउंट्स में पूरा एडजस्टमेंट। अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं है सर, एंट्री बाकी है। सर अकाउंटिंग करते नहीं एक मंथे तक, उसके बाद भी एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट करते हैं, एंट्री लेनी बाकी है, क्या कर क्या रहे हैं आप ऑनेस्टली? एक महीने के एंड में काउंटिंग करते हैं ना हम लोग मंथ एंड में। क्यों? कंटेंट में करते हैं क्यों? बाकी। अरे मैडम डेली का सैलरी एक दिन की मिलती है, पूरे महीने की मिलती है। देखो पूरे महीने की मिलती है, अकाउंटेंट को इतना ही पैसा मिलते हैं सर। अच्छा इतने देते हैं? एक बार आके करता है। अच्छा महीने एक ही बार क्या करता है? ऐसे ये को पेमेंट नहीं देता, अकाउंट को पेमेंट नहीं देते, बट बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, ऑनेस्टली। पेमेंट हमको भी कहा देते हैं टाइम से, गवर्नमेंट को भी है, कुछ करते नहीं है टाइम पे है। फिर भी ऑनेस्ट है सर। सर टाइम से कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट का खाली बोला 2 है महीने की बाकी है। 3 महीने का होगा तो फ्रीज होगा अकाउंट, अभी तो हमारा 2 महीने क्या बाकी है। तो मतलब कि हक से का 2-2 महीने पेंडिंग रखोगे जिंदगी भर उसको? गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है सर।
फैसिलिटी दी, अभी आपको देखिए फैसिलिटी आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है या बैंक की है? सर एक मिनट सुबह, हाँ मैंने काफी चीज देखी है इधर और ऑब्जेक्शनेबल है, जरा देखो और सर ये देखो अभी यहाँ एक मिला, हाँ इनका कोई झोलझाल करके सिस्टर कंसेंट है सर, बोल जा। और उसके साथ अंडर वैल्यूएशन के ट्रांजेक्शन सर, और ये इन्होंने कितना? आईटीसी भी लिया है फैक्ट्री शेड के ऊपर। और भी है क्या विकास, ये सर भी है क्या कुछ? सर कोई बोनस कंपनी भी है, बोनस है कि बोगस पता नहीं। अरे सब डॉक्यूमेंट गैदर करो और नहीं सर, आप सारे बता दो, हम सब चीज का आपको जवाब दे हाँ, देंगे। हाँ, चालू करेंगे। हमारे पास सब है, व्यवस्थित काम है। हमने इनकम टैक्स के लिए महेश जी को और मनीष जी को जीएसटी के लिए अपॉइंट किया हुआ है, वो सबसे बढ़िया है। बस दोनों में हमारे पास है। आप कितना फीस पैसा मांगते ही नहीं है सर वो लोग। कितना पैसा भरने को तैयार हो? अरे सर राजनीति नहीं है, पैसा पैसा ये सीरियस में करेंगे नहीं तो समझ इशू करते हैं, तो स्टेटमेंट चालू करते हैं। हाँ तो स्पॉट समन्स तैयार करो, चलो सर हाँ सर सर्व करो इनके ऊपर। आप साइन के साथ सर वो उसको सीए को बुला लो क्या सर? हाँ तो फोन करके बुला लेना, देखा भी लगा। हो गई होगी। सुबह मीटिंग में थे, शाम को थोड़ी मीटिंग में होंगे। हाँ सर, अरे फोन उठा के अपना पेमेंट दिया है 3 साल नहीं पहले। बुला लो सर, बुला लो। हाँ हाँ बुला तो बाहर बैठेंगे, वो पीछे वॉशरूम के पास बैठ जाएंगे। नीचे वॉचमैन के पास बैठे सर। तो सर बुला के क्या पहले तो हमको बनाया। आपको बुलाना बोल दिया, बुला दीजिए, क्या? ये थोड़ा ना अंदर जाने देंगे हम। 20,000 रुपए घंटे का होगा, तो 20,000 रुपए घंटे का बोल रहे हैं। इसको भी बता दे जरूर। बता दो सर। आपको चाहिए, मेरे पास 10,000 रुपए घंटे वाला है। बिल्कुल क्या? अरे कोई अननोन नंबर आ रहा है। हाँ लो उठाओ, स्पीकर पे डालो, बात करो। हाँ उठा के बात करो, स्पीकर डालो, देखो क्या है अननोन नंबर। हेलो हेलो शैलेंद्र जी, हाँ बोलो कौन? आपके 10 किलो का पार्सल है, लेके आओ। अरे कौन है भाई? अरे क्या बात है क्या? अरे हमारा कोई पार्सल नहीं है। नाम लेके बोला शैलेंद्र जी उन्होंने। रोंग नंबर है अरे सर। मैं तो बहुत है। धीरज नंबर नोट करें उनका। अरे वो तो डिलीट कर दिया हमने। इनको फोन चलाने को नहीं आता सर जी। अरे मैं नंबर निकाला क्या? फोन चलाने का तो बस डिलीट कर देता नंबर। 10 पेटी ला रहा था। अरे मैं 10 किलो ऐसा नोटों के वजन से बात कर रहे सर हो? कोई अमेज़न का पार्सल है सर, सर बताइए। सर ऐड कर लेते हैं सर, ये 10 लाख हाँ, तुम ऐड करो। 25 ऑफिस में 15 घर में 40 और 10 से आने वाला 50। 50 तो हो गया। 50 का नोट कर लो कैश में। 5 किलो पहले की सर, हाँ 5 किलो आप वो तो इन्वेंट्री कर दिया है। अच्छा डीजल, बाकी स्टॉक स्टेटमेंट और सब देख लिया? सर अपडेट ही नहीं किया है, बोल रहे मैनेजमेंट से अकाउंटिंग नहीं किया है, स्टॉक रजिस्टर अपडेट ही नहीं है। 3 महीने से अरे, वो करते तो नहीं है, मैडम- बुक्स में एंट्री मारते नहीं है, हाँ, कैश तो निकालते गोडाउन हैं। का अरे वो छोटा मोटा एडजस्टमेंट हुआ चाहिए। एड्रेस ही नहीं है वो गोडाउन का। एड्रेस नहीं है, हाँ सर वो 3 बार अप्लाई किया हमने वो सब हम देख लेंगे। सर, 3 बार अप्लाई किया, वो बोलते हैं मेरी फोटो आधार से मैच नहीं होती है, रिजेक्ट कर देता है। वो डिपार्टमेंट की पता नहीं क्या हो रखा है। ये कौन सा भाई डिफेक्ट मेमो आता है, एड्रेस मैच नहीं होता है, मेरे पास सब फोटो। कुछ है। अरे बचपन की फोटो आधार में लगाओ तो ऐसे ही होगा ना। जाके एक सुनो, मैं बताता सलाह देता हूँ, एक बार ऑफिसर को मिलो। सर लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं सब ऑनलाइन होता है सब। अरे आधार ऑफिसर बोला नए फोटो खिंचाने के लिए, जा देखो हाँ तुम लोग तो बस खाली वही काम कराते रहते हो। आजकल बायोमेट्रिक भी चालू हो गया, मालूम है ना? वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। वहाँ पर जाओ, आप लोग के लिए खास सुविधा दी है गवर्नमेंट ने। तो बायोमेट्रिक तो गुजरात में हुआ ना, अपने यहाँ क्या हुआ? अरे तो शाम को फ्लाइंग लाइन पकड़ के चले जाओ ना, गुजरात में करवा के आ जाओ। सर बायोमेट्रिक गुजरात में कैसे कराएंगे? रजिस्ट्रेशन तो बॉम्बे में है ना। धीरज वहाँ पर कोई है क्या गोडाउन खाली? वहाँ पर एड्रेस दे दो, वहाँ का गोडाउन गुजरात चाहिए इनको। पहला गोडाउन ले लो, फिर बायोमेट्रिक। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा एक गोडाउन है जिसका हम 6 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, हर बार रिजेक्ट कर देते अरे हैं। नया गोडाउन तो उसका वास्तु अच्छा नहीं होगा। अरे जीएसटी एक जीएसटी का ऑफिसर है या वास्तु कंसल्टेंट है? रियल एस्टेट ब्रोकर। अरे धीरज, पागल है मैं क्या? जो गोडाउन पे टीम गई है सर तो उसका स्टॉक का क्या डिटेल्स आ रहा है? अरे वो सब छोटे मोटे एडजस्टमेंट बाकी होंगे मैडम, बाकी एडजस्टमेंट का क्या? लैंग्वेज में बात किया। ये कुछ चेंजिंग नहीं लग रहा है यहाँ पर। सही है। सर यू आर ऑनेस्ट। सर वो हर 3 महीने में स्टॉक का ऑडिट होता है, फिर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बुक्स में मार देते हैं। कितना पैसा भर रहे हो आप? सर मैं चैलेंज। अरे भाई ठीक है, बट हो तो आप ही ना। तो सर राजेंद्र तो आप में क्या? आप अंग्रेज मत बोलो यहाँ पर, सीधे सीधे जवाब दो, सर को अरेस्ट कर देंगे आपको अभी।
सर अरेस्ट अरेस्ट बार बार क्या कर रहे हो आप? अरेस्ट तो कर ही लो ना, अरेस्टेड क्यों आगे स्टेटमेंट और ये सब क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आप हर बार ऐसे अरेस्ट की धमकी नहीं दे सकते हो। मत दो सर। हाँ अरे ये बहुत कायदा बता रहे हो। धीरज देखिए उनका मनीष जी का ईमेल आया वो पहले इसका मेमो बनाओ, पहले इसका मेमो बनाओ। ठीक है, घर का एड्रेस तो घर पे सर्च मार किया, बहुत ज्ञान बांटते हैं, टैक्स पेड बन गया तो सर पे बैठेगा। सर सैलरी जस्टिफाई कर रहा हूँ सॉरी सर। दिवाली बोनस मिला है क्या तुमको? सर 8 बज गए सर, कुछ खाने के लिए बना लो, तबियत नहीं नहीं अभी अभी कुछ नहीं। सर मैं 6 बजे रोज खाना खा लेता हूँ सर। पहले काम करो बाद में। फिर एक काम करो, मंगा लेते हैं ना। ये बाबा जी की बूटी दे दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो एक गोली दे दो, शाम तक सुबह तक बूटी लगेगी आपको। आ जाओ। वो विटनेस सर वो विटनेस भी भूखा है सर, दोनों। हाँ। सर आपके लिए भी कुछ मंगा देता हूँ सर, आप भी भूखे सो सर। नहीं आ जाएगा, वो बोल दिया हमने, अपना लोग ऑर्डर कर दिया, अभी आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। सर तो हमारा तो मंगा लिया आप हमारे सर यहाँ आप देते हैं ना आपको लिए ना, एक गोली इनको भी दो। अरे थोड़ी सी बनेगा ये क्या है? ये आपका पहले समन साइन कीजिए, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। समन साइन कीजिए आपका। अभी तो साइन किया अपन ने, आए थे तब क्या साइन किया? आदेश हुआ था। तो ये क्या है? ये समझ है सर। तो दोनों में क्या फर्क है? सर इस ये देख के फिर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिए। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले तुम देख ले यार क्या लिखा है। तुम्हारा रिकॉर्ड को स्टेटमेंट नहीं सर, नहीं ना, साइन तो करो। सर सही है सर। बिल्कुल सही। एक बार समन बनाओ। नहीं नहीं सर सही है सर। क्या है? नहीं लिखा है ना सर इसका नाम क्या होता है? तो राजेंद्र लिखा है यार। धीरज, अरे तुम में शैलेंद्र उर्फ राजेंद्र बना दो। सॉरी अरे वो तुम्हें प्रॉब्लम है। अरे ठीक करो इसको। एंड सीए को भी ऐड करता हूँ। नहीं सर नहीं हाँ चलिए भाई, आपका स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड करना चालू करेंगे। आपका कंप्यूटर में टाइप करें, आप लिख के देंगे। सर 9 बज गए सर, मेरे को थोड़ी यार कुछ तबीयत खराब मंगा है, लेते हैं। खाना मंगा खाना लेता मंगा लेते हैं, तब तक खाना हूँ। आता है सर। नहीं सुमित उनका सुनो नहीं, काम करो और जो भी इश्यूज है ना उनके सर 9 बज गए सर, मैं रोज 6 बजे खाना खाता हाँ हूँ। ठीक है सर भी बोल रहे थे उनको भूख लगी है। सर खाना नहीं 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 ठीक है चलो काम करो। थोड़ा आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर करेंगे, खाना वाना करवाएंगे अभी। तो थोड़ा पानी पी लेंगे। हाँ पानी पी लेंगे। पानी चाहिए थोड़ा, पानी दो पानी दे दे, अरे आपकी सेवा करेंगे। दो। जितना टैक्स बचे गवर्नमेंट उतना ही पानी मिलेगा आपको। लगा ना गलत ये है, तो टैक्स ही पूरा भरिए फिर। इधर टैक्स तो बराबर बने सर, ऑनेस्ट 3 महीने का टैक्स भरा नहीं है आपने। सर 2 महीने का 3 महीने का तो आप होटल बंद कर देते ना सर। सर मैं घर पे फोन कर दूंगा कि लेट होएगा, 10 बज गए हाँ, हाँ, टेंशन है अभी। एक स्पीकर पे लगाओ, बात करो स्पीकर पे। करो, कॉल करो, मेरी तो फोन से बेबी का कॉल करो, स्पीकर पे रखो। स्पीकर पे लगा के बात करो। सर बहुत डांटती है हमको स्पीकर पे रखेगा। अरे वो तो सबकी डांटती है उसमें। अरे धीरज सर सब ऐड कर रहे हो ना लाइब्रेरी। चालू कर दिया, मीटर ऑन। तो ये आपका स्टेटमेंट, आपका यहाँ सर कंप्यूटर टाइप करेंगे ना। मेरे घर से फोन रखा है। हाँ नहीं नहीं, उठा लो आप बात हाँ? करो। कर लो। हाँ आप बात करो, स्पीकर डाल दो। अरे वो मेरी भी बहुत डांटती है। चलो ठीक है, बात कोड में बात नहीं है एकदम। नहीं आपके सामने हाँ सर। बात ठीक है। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर निकल गया क्या वहाँ पे? अरे कायदा नहीं पड़ गया, खाना भी नहीं दिया, अभी पानी भी चला दफ्तर में पड़ गया। आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे? अरे पता नहीं अभी तो। तो आप कल कब तक आओगे? खाने में क्या खाओगे, लौकी या टिंडे? अरे लौकी टिंडे नहीं तो डंडे पड़ रहे हैं, लौकी टिंडे नहीं पड़ डंडे पड़ रहे नहीं उठाते ना, घर जाके डंडे पड़ते हैं अलग से। चलिए आप यहाँ पर नाम भरिए। सर इसमें ऐसा है, हाँ, जो आपको मालूम है वही करना है। जब जो जब आपको पता ही नहीं है। जो आपको नहीं आता वो आप मना कर सकते हो कि मेरे को नहीं आता है। वो हम बता देंगे आपको। सर आपको जब कोई भी नहीं लीगल आंसर नहीं देने की जरूरत है, ये खाली फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको कंप्लेंट बताना है सर। इसका रेस्टोरेंट करना है कुछ। तो पता आ जाना रहेगा, कितना बोल रहा है? अरे बोला का समझ गया, समझ गया। सर आपको कोई भी लीगल चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फैक्चुअली बताइए तो आपको अभी तो कुछ पता ही नहीं है ना, लीगल का जवाब तो मनीष जी से ले लेंगे अपन बाद में। सर उनको भी तो और आप मना कर सकते हो तो आपको नहीं आता कि मेरे को नहीं आता। बिल्कुल धीरज इसका मेमो तैयार हुआ। नहीं सर सॉरी सर। ऑब्स्ट्रक्शन का गवर्नमेंट काम है आप। सर मैं तो खाली बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ आपके समझ में कि ऐसे ऐसे जो आपको आता जो लिखा हुआ है पढ़ के बताएंगे पूरा।
ये पढ़े लिखे है ना? सर चालू कर लेते सर अभी हाँ। एक मिनट। सर आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सिंपल सिंपल पूछेंगे, आपका नाम आप ऐसे बताइए। पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब। डिग्री है ना आपके पास इनमें? अरे सर डिग्री और पढ़े लिखे में फर्क होता है। डिग्री तो है ना, बस ठीक है, हो गया, पढ़े लिखे हैं आप। मिल जाती है सर। हाँ। आजकल व्हाट्सएप पे इतनी डिग्रियां मिलती है। चलिए आपका नाम बताइए, आपका कंप्यूटर में टाइप करेंगे लिखेंगे हाथ से? सर टाइप भी कर लेते हैं। टाइप करेंगे ना? अरे टाइप कर लेंगे ना। सर मैं कर देता हूँ चलो फटाफट या तो आप मेरे को क्वेश्चन दे दो सर, मैं फटाफट चैट जीपीटी से सारे आंसर निकाल के देता हूँ। हमको फैक्चुअल आंसर्स चाहिए, चैट जीपीटी चाहिए। आप पे चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन लिए धीरज, इनका इंपोर्ट और सर्विस बताओ। इतना सस्ता है? चलो काम आएगा, वो शो पर बना देते हैं। आपका वो लॉगिन पासवर्ड ना चैट जीपीटी का जरा हमको शो पर बनाने काम आ जाएगा। हाँ सर मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा है, मैं फटाफट कर दूं। हाँ मैं फटाफट टाइप कर दूं सर, मेरा स्पीड अच्छा है। जल्दी टाइपिंग 11 बज गए सर, टाइम से घर चले जाएंगे, भूख भी लगी है। धीरज, यस सर। तुम्हारे बच्चे का एस्से बनाना था ना? बाकी माय फेवरेट एनिमल सर। जो इनको जो टाइप करेंगे, इनको टाइपिंग कुछ बहुत अच्छी आती है, इनको टाइपिंग का शौक है। सॉरी सर। चलिए आपका नाम बताइए, आपके फादर का नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र। हाँ चलिए दबाव में बताइए सर, आपका सीधा नाम बता दीजिए सर। चलिए आप इधर ध्यान दीजिए, आपका एज वेज बताइए सर। शरीर में ये सर तो क्या इतने देर में बिल्कुल जैसे थोड़ी 11 बजे तक इधर बैठता गलत दिन राजेंद्र आपने निकल बोल जाता दिया नहीं। अरे चलिए जल्दी, वो विटनेस बेचारा बोल रहा होगा बैठे बैठे। साढ़े 11 जाने को क्या डायबिटीज है मैं कई चीजें हैं बेटा। आज सुबह से हुई क्या डायबिटीज हमारे आने के बाद? खाने दे दो डायबिटीज। साढ़े 11 बजे सर, मैं 6 बजे खाता हूँ। इंसुलिन का इंजेक्शन दिखाओ, डायबिटीज का तो। डायबिटीज नहीं है सर, 6 बजे खाता हूँ सर, साढ़े 11 फिटनेस को पूछो, हम कुछ प्रेशर कर रहे हैं क्या इनको? हमने कुछ भी प्रेशर किया क्या अभी तक? फिर आप जवाब दो। आप चुप बैठो, आप बैठो। टीचर आपके पास मिनट है क्या? इसको दे दो, भूख लगी, मिनट खाने को थोड़ा। है ना सर, वहाँ ले लो टेबल पे। हाँ आप यहाँ पर आपका एज भरिए, आपका घर का एड्रेस भरिए। इसे मैच होता है ना? हाँ मैच होता है, आपका गांव का एड्रेस भरिए सब। सर गाँव का कोई एड्रेस नहीं है। कोई नहीं, यहीं पे चला इधर ही मार के क्या गाँव जाओगे? अच्छा चलिए, आधार नंबर भरिए, इसमें मोबाइल नंबर डालिए। कोई मोबाइल नंबर डाला जिससे फोन उठाओगे हमारा। मैं हर एक का फोन उठाता हूँ सर। हाँ नहीं, फोन नहीं उठाया तो देखो आप आपने नंबर क्यों उठाया ना, जबरदस्ती किसका रॉन्ग नंबर आ गया वो भी उठाना पड़ा। बस उनको गलती से जो डिलीट किया ना, आपको गलती से ब्लॉक मत करना। हमारा फोन नहीं उठाया तो हम आपको उठाएंगे, ये याद रखना। आप ये स्टेटमेंट के बारे में उनको सब बताओ। आप बता कैसे एक लाइन पे जाते हैं इनका। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर बीकॉम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये कौन सी है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तभी बोले थे डिग्री है अभी। मैंने बोला ना हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात। आपकी कंपनी डेजिग्नेशन डालिए, क्या है डेजिग्नेशन? तो मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, तो सारा मिस मैनेजमेंट आप ही देखते हैं। मैंने मैनेज करता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस मैनेजमेंट जाने तो नहीं है। मिस मैनेजमेंट का मैनेजमेंट आप करते हैं? नहीं मिस मैनेजमेंट है ही नहीं सर, कौन करता है मिस मैनेजमेंट? कोई नहीं करता सर। कोई नहीं करता है, ऐसे अपने आप हो गया सब पूरा। मैंने सर वी आर ऑनेस्ट, हाँ वो तो दिख रहा है वी आर आपका ऑनेस्टली। तो कितने साल से कंपनी आप एमडीए बताइए, डालिए वहाँ 5 साल से। 5 साल से हाँ जैसे कंपनी बनी सर, मैं फाउंडर हूँ। फाउंडर इंडिया। मैं फाउंडर सीईओ सर। जब से सीईओ को बोला तो दाढ़ी नहीं बनाई क्या? सैलरी मिलती है यार अच्छी से, बोला आपको एकदम सीईओ लोगे। सॉरी सर। एक आध और हमारे पास अच्छी कंपनी है, वर्चुअल सीईओ काम करोगे क्या? अरे तो उसके से आदमी मिलता है, उसको भी ट्राई करिए क्या? 5 साल से सेम चैनल पे काम कर रहे हैं। पैकेज उसका चलिए भाई, अभी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ये सेक्शन 70 जीएसटी में रिकॉर्ड हो रहा है। सेक्शन 70 जानते हैं ना? क्या होता है भाई? वही कि सेक्शन 70 में आपको जो भी पूछा जाए आपको सही से ही बताना है। तो मैं तो सही बात करता बस हूँ। और बात आपको नहीं आएगा मतलब कैसे मुझे आता ही नहीं। हाँ वो हम बता देंगे। लीगल आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, और आपका स्टेटमेंट है जितना आपको आता है वो लिखना है, वो आपको बता भी नहीं सकते कि ये लिखो वो लिखो। धीरज का मेमो क्या हुआ? मैं समझ गया इनको उनको उधर उन्हें बिठाओ जरा। सॉरी सर। जितना पूछा जाए उतना ज्ञान दो। वो सर सेमिनार नहीं है ज्यादा ज्ञान देने के लिए आप फ्री में। चलिए
आपका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर, आपको समन्स इशू किया है, आपको सेक्शन 70 प्रोविजन समझा दी थी इन्होंने। हाँ, उसने बता दिया कि मुझे जो नहीं आता वो नहीं बताना है और लीगल आंसर नहीं देना है। दो ही चीज समझ में आई मुझे। जो बताना वो नहीं समझ में आया आपको, जो आपको नहीं आता वो आपको बताएंगे क्या बताना है आपको, उसको नहीं आता है। नहीं वो ऐसे ही बोलता है, उसको पूरी सैलरी नहीं मिली ना, इसलिए ऐसे ही बताता है। कोई इवेसिव स्टेटमेंट मत देना। नहीं सर, अभी आपका कोई डिसरिस्पेक्ट किया क्या? नहीं वो किया नहीं है, ठीक है। अरे बेटा, कोई डिसरिस्पेक्ट किया क्या हमने? हाँ, बस। नहीं ना, कितना रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो। नहीं आप अब देखिए आपका सेक्शन आपसे ऐसा कोई ऐसी चीज दिखा नहीं होगा रिस्पेक्टफुली आप लोगों से बात कर रहे हो। तो हम भी कहाँ प्रेशर कर रहे हैं? मतलब प्रेशर किया कुछ, नहीं बिल्कुल कोई नहीं। दबाव बनाया आप पे, कोई डराया धमकाया आपको, कुछ किया आपने आपको, सब मंगाएगा आपका। हाँ बोल रहे आपको, तो एक बार कुछ मना नहीं किया सर आपको। 12 बज गए सर प्लीज। अरे तुम तो 6 बजे खाते ही नहीं हो, तो 12 बज गया क्या करोगे मंगा के? उनको देखो खाता हूँ वो तो अभी 12 बज गए सर, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अभी 6 घंटा रुको, सुबह के 6 बजे फिर खा लेना, 6 बजे खाओगे फिर बस। तो देखो ये आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट देना, वॉलंटरी स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? कोई जवाब गारंटी आपका गारंटी है? कोई कोई जवाब नहीं, हम आपको दबाया कुछ, डराया धमकाया आपको, कुछ मैसेज किया आपको, नहीं किया ना? वैसे कर क्या रहे? कुछ नहीं कर रहे, वही तो बात है, इसलिए आप शांति से बैठे हैं। पैसा भरो, पैसा भरो, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है आपको चलो चलो आगे बढ़ो। देखिए चलो मैं घर भी जाना है सर। ये जो अभी जो इंक्वायरी है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, ध्यान से सुनिए अभी आप आपके प्रोविजन, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है इंडियन पीनल कोड सेक्शन 193 सेक्शन 228 के अंदर। यार हम तो 70 बोला, अभी 190 तक ले रहे हैं, क्या कंफ्यूज है मेरे यार। मेरे द्वारा हर किसी का जवाब क्या सही जवाब नहीं, मैं तो गलत बोलता ही नहीं। यहाँ पर आपने कोई भी फॉल्स फैब्रिकेटेड मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया या कोई फॉल्स फैब्रिकेटेड मिसलीडिंग एविडेंस दिया हमको, जीएसटी का इवेशन आपका कुछ हो ना हो, साथ आपको अंदर डाल दूंगा मैं आपको। सर मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, बस देखो इतने सारे विटनेस बैठे 25 साल से देख रहे हैं मुझे। 25 साल से देख रहे हैं आपको टैक्स इवेट करते हुए, नहीं सच बोलते हुए। सच बोलते हुए, हाँ सच्ची टैक्स प्लानिंग कराते हुए वैसे। बिल्कुल। अच्छा चलिए देखते हैं। प्लान तो अच्छी होती है ना, कैसे होती है? अच्छा देखिएगा चलिए, आपने यहाँ पर प्रोसीडिंग में कहीं पे भी इंटरप्शन किया, हमको इंसल्ट किया, खास आपके लिए इंटरप्शन से बहुत इंटरप्ट कर रहा बीच में, आप समझ स्टार्ट हो गया है, सेक्शन 228 आईपीसी में अंदर डाल दूंगा बीच में इंटरप्ट किया तो। सर आप ऐसे रख के नहीं कर सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। डाल लेते हैं इनको डालो ताकि वो सॉरी सर। अगली बार बिना पूछे बोले अंदर डाल दूंगा। यहाँ से उठ भी नहीं सकते आप। यहाँ से उठे वो भी हमारी इंसल्ट काउंट होगी आपकी, समझ लिया? आप बोल रहे इंटरप्ट भी मत करो, उठो भी मत, बैठो भी मत, तो यार फिर कैसे आप बोल रहे हैं बिना प्रेशर के? विटनेस भाई देखो क्या कर रहे हैं, आप क्या बढ़ रहे हैं बताओ। विटनेस को कहाँ से लाए सर? लाइबिलिटी तो बताओ क्या जेबी नगर रेप्यूटेड पर्सन है ये तो यार बिल्कुल का दुकान लगाता था। रेप्यूटेड बिल की दुकान है वो, भीड़ देखी कितनी थी कि अपना बिजनेस छोड़ के आए वो। बिस्लरी का पानी पैसा तो मैं भरना ना। हाँ वो आप देख लीजिएगा, सेटल कर दीजिएगा। चलिए सर जल्दी करो ना, मेरे को घर भी जाना है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सर हो गया ना, और क्या इसमें विचार है? स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो रहा है आपके अगेंस्ट एविडेंस यूज कर सकते हैं हम लीगल प्रोसीडिंग में, ठीक है? आपको सर मेरा स्टेटमेंट मेरे कैसे? यस आप ही अगेंस्ट यूज होगा। वो देखा नहीं है यूएस में सब बोलते हैं, जो लंबा बोलते रहते हैं, एनीथिंग दैट यू कैन से विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू कोर्ट ऑफ लॉ, बस वैसा ही है एकदम। सर मैं यूएस में भी कह रहा हूँ। सीरीज देख लो, कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स अमेज़न में बहुत आती है सब वहां पर। सर उसमें पैसे लगे। हाँ सर थोड़ा जल्दी कर देंगे क्या? हाँ अभी कर दिया, ऐसा बस करो, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए आपको कौन सी लैंग्वेज आती है भाई, क्या इसमें आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? सर मुझे इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। अच्छा आती है ना, कंप्यूटर आता है आपके रिक्वेस्ट में, कंप्यूटर में आप टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है ना, बस चलिए आपकी कंपनी में देखिए क्वेश्चन बताते जाते हैं, आप वहाँ पर लिखते जाइए फटाफट। सर मेरा स्पीड अच्छा है। स्टेटमेंट आपका हो रहा है कि उनका हो रहा है? नहीं मेरा हाँ बस चलिए। उसका नहीं ले सकते। हाँ उसका नहीं। नहीं सर क्या समझ बनाओ, नहीं सर, मैं नौकरी पे, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं। उसका हम ना ऑफिस में लेंगे स्टेटमेंट। उसको हम अलग से ऑफिस में लेंगे उसको। सॉरी सर। चलिए आपका कंपनी में प्रोफाइल बताइए, आपका रोल क्या कंपनी में? सर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा क्या काम करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर में, क्या करते हो? सर पूरी कंपनी को मैनेज करता हूँ। अच्छा तो पूरे कंपनी का अकाउंट्स फाइनेंस सब नहीं नॉट फाइनेंस तो ये देखता है। अच्छा तो आप क्या नहीं बात। आप क्या लिखते हैं?
मैं बाकी सब ओवरऑल देखता हूँ। प्रोडक्शन प्रोडक्शन सब दिखते हैं पूरा। हाँ अच्छा ओवरऑल अच्छा अच्छा। ओवरऑल ठीक है, आपकी कंपनी ये ऑनेस्ट लिमिटेड जो नाम ऑनेस्ट है, क्या काम करती है? नहीं एक्चुअली ऑनेस्ट है। अच्छा, क्या काम क्या करती है? सर हमारा जो धंधा है वो आयरन और मैन्युफैक्चरिंग, कास्ट आयरन, स्लैब, रॉड, बार्स। मैं जाऊंगा ऑडिट उधर सलिया बार लोहे का सलिया सर, बार नहीं। ये भाई बाहर बनता है सर, बाहर बन तो अरे बाबा, रात का 11 बजे तुमको क्या बाल पूछता है कि बाकी? हाँ ठीक है, ये फटाफट कर भाई। तो जल्दी जल्दी करो। सर भूख लगी है सर, खाना बगल में। अरे मंगाते हैं। आया आया, बोल दिया आएगा, थोड़ी देर में आएगा। जब आ जाएगा तब आपको खिला देंगे बस। सर मैं परेशान सा हो रहा हूँ सर, घर चला जाऊँ। आप तो बच्चे उधर पीछे लेट हो जाओ। आप चुप बैठो, आप चलो। हाँ बस। भाई आपको बताइए, आपका बताइए, बाहर के आगे बढ़ी है। थोड़ा पानी पियो, थोड़ा पानी पियो। आप बाहर चलने के आगे बढ़ी है। अब क्या क्या काम अरे बाहर कितना नहीं है सर वो। हाँ हाँ, जो भी है चलिए आगे आगे बताइए क्या काम अच्छा, और हमारा सप्लाई जो है वो उधर B2B है, B2C है, B2G है। ये B2G क्या होता है? बिजनेस टू गॉड। गवर्नमेंट सर। सर आपको तो रिसर्च किया होगा ना आने के पहले। अरे हम करते हैं वो, हमारा नहीं, आपका ज्ञान समझना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो आपने तो देखा ही होगा B2G क्या होता है। क्या होता है बताइए आप बताइए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर लोकल को लगता है गवर्नमेंट को। अच्छा, तो कहाँ पर किसमें दे रहे हैं? रेलवे को। तो डायरेक्ट रेलवे को सकता है क्या? ठीक कोई नहीं सर, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को है। ठेकेदार को है? आप कुछ खा कर रहा था ना। अरे सर, ठेकेदार को सप्लाई है सर, रेलवे मिनिस्ट्री में नहीं है डायरेक्ट का कोई। और क्यों पैसा नहीं सर, ठेकेदार को दे देंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट पर क्या करेंगे अपना आराम से अभी पूरा सेवा के। ऊपर पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो ऊपर तक जाएगा एड्रेस फिर आपका, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल कराएंगे आप सर का पावर जानते नहीं, आपको क्या क्या करेंगे अभी। भाई बताइए, आपको और क्या, आपकी ग्रुप कंपनी, सिस्टर कंपनी, ब्रदर फादर मदर कंपनी क्या क्या है और? नहीं एक ही सिस्टम कंसर्न है सर। अच्छा बढ़िया। अच्छा, वो नाम तो सुनिए ना सर। ये तो यार कहाँ से आ रहा है? 14 में CEO है। कार्ड भी लेना, विजिटिंग कार्ड। नहीं ये तो 2 साल पहले ऐसे ही बनाया था सर, कस्टमर को दिखाने के लिए। जैसा बाहर नहीं जाते तो सही जाते हैं। अरे यार सॉरी तो शांति रखना। नीरज, एक काम करो, यहाँ पर इनका ऑनेस्ट जितना सैलरी आ रहा है ना, रेमुनरेशन आ रहा है, उसका 75% शेड्यूल में इनका पकड़ लो वहाँ पर और चला बना दो। पगार मिलती है सर वहाँ पे, मैं तो हाँ, वो काम नहीं करता। बिना पगार के वहाँ पर शेड्यूल में ट्रांजेक्शन होता है। बताओ भाई, शेड्यूल क्या होता है इनको? सर उसमें तभी हाँ होता हो है गया, चलो भाई चला बताओ तुम्हें। शेड्यूल क्या होता है आप समझाओ सर। अरे बाद में समझ लेना। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको कोई एडवाइजरी करते हाँ हैं। बस सर वो बस हो गया, बस हो गया। तो बड़ा उसमें कैसे आएगा सर? आप रिलेटेड पार्टी हो ना, वाइफ से शादी हुई है ना, हाँ भाई तो शायद बस हो गया, रिलेटेड पार्टी हो आप खत्म हो गया बात। रिलेटेड है लेकिन मैं उसको कुछ सर्विस नहीं दे रहा। सीईओ आप आके, आपको कार्ड मिल गया, एविडेंस है हमारे पास, इसको पंचनामा कर दो विजिटिंग कार्ड को। हाँ सर, ले पंचनामा लिया कर दो सर, वहाँ लिया पर। सर। बताइए आपको झुंझान में कौन कौन डायरेक्टर है वहाँ पर? सर मेरी बीवी है अच्छा। 65% और अच्छा। मेरा साला है 35% सर। अच्छा 35%, हाँ मतलब बीवी का 65%, आपका 35%। नहीं मेरा 35 नहीं, मेरे साले का 35। आया तो समझ में आ रहा है, सालों पहले साले ने आपको बकरा बना दिया, साले को बकरा बना रहे हो आप। नहीं नहीं सर उसका एक्चुअल में पैसा है। एक्चुअल उसका है, हाँ और पैसा लगाना पूरा काम आप करते हैं वहाँ पर। नहीं नहीं दोनों मिलके करते हैं। अच्छा चलिए, आपने झोलझाल कंपनी क्या काम कर दी है? सर टोटल कंपनी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग करती है अच्छा। मशीनरी, अच्छा और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं अच्छा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अच्छा, तो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं आप पूरा? उसको 100% एक्सपोर्ट है। पूरा? ये सर देश की सेवा कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी ला रहे हैं सर। आपने तो बोला कुछ कंपनी काम नहीं करता, आपको इतना डिटेल कैसे मालूम उसके बारे में फिर? सर, वो आप मेरे से वहाँ पर नहीं नहीं मैं सीईओ नहीं हूँ लेकिन पता क्या है मालूम है आपको? आपको टैक्स भरते हैं आप इस पे, मशीन पे? मशीन तो एक्सपोर्ट है ना सर। हाँ तो टैक्स लगता है आपका इस पे? तो एक्चुअली एग्जम्प्टेड है ना, बस हाँ, बस ये नॉट एग्जम्प्टेड आपका ही है। इसका रिफंड लेते हैं आप? एक्सपोर्ट का तो रिफंड मिलता है ना। वो तो अपनी को थोड़ी मालूम, वो तो सुनता है। हाँ नहीं हमको नहीं मालूम। मुझे कैसे मालूम होगा, कंपनी बताएगी। सर इनवॉइस मिला है। हाँ बाकी सबको तो 6 लाख के बीच है, पर ये छोटा और ऑनेस्ट के बीच में 1 लाख पर टन का डिस्काउंट, 1 लाख पर टन डिस्काउंट। अरे बीवी उतना पैसा देती है, कम है क्या? सर ये इनवॉइस 20% तो दे रही है। तारीख क्या है इसकी? इनवॉइस की तारीख क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च को ईयर एंड पे एडजस्टमेंट हो गया आपका? अरे एडजस्टमेंट नहीं, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है सर, ईमेल भी लगी है, ईमेल भी है ना इसका। हाँ सर, सर
सर ईवे में बताओ। उसके पीछे लगा हुआ है सर ईवे बिल वगैरह जीआर सर एक्चुअल ट्रांजैक्शन है सर। और हमने बात भी की है हमारे जीएसटी एक्सपर्ट से सर सर। टेक्निकल नंबर देखिए अब व्हीकल परिवहन साइट पे चेक करो इसका, और इसका फास्ट टैग से ट्रैक करो, ये कहाँ मोबाइल ट्रैक है। और सर वो तो मेरे को अलाउड है ना सर। अब इसका बताओ कराएंगे। स्कूटर का नंबर स्कूटर का नंबर है। ये नहीं है, अरे आप नंबर बराबर डालो, आपने एक दिन ऊपर नीचे कर दिया, नहीं सर 6 का 7 कर दिया। जाओ मैडम मैं चेक करा। सीधा सर को चेक करो बराबर। करो चेक करो, उसका टनेज चेक करो, ट्रक होगा तो। ये खाली डिस्काउंट भी है और कुछ नहीं है। ये इनवॉइस नंबर नहीं मैच हो रहा है, दूसरा ईवे बिल होगा। सर दो इन्वॉइस मिलता है एक इन्वॉइस के। सर हमारा रेगुलर ट्रांजैक्शन हम उनको रेगुलर माल सप्लाई करते हैं, एक हम लोग उनको डिस्काउंट में करते हैं मार्केट से। डिस्काउंट में क्यों कर रहे हो? उनको सर इन्वर्टेड में तकलीफ आता है, कैपिटल गुड्स का जब से रिफंड नहीं मिलता ना तो आपको कैश ब्लॉकेज होता है, तो इसलिए ऐसा जीएसटी एक्सपेंडेड ये सारा टैक्स अवॉइडेंस है। तो पूरा सेक्शन 15(1) और रूल 28 बोलता है कि अगर मैं रिलेटेड पार्टी को पूरा क्रेडिट मिलता है तो मैं कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करूं, दैट विल बी डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। और उसके बाद में आपका सीबीएसई का सर्कुलर भी आया 4 महीने पहले। अभी आपने बोला ना पूरा क्रेडिट मिलता है, तो हाँ आपका मशीन वो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्टेड है? मशीन एग्जाम्प्ट है सर। एग्जम्प्ट है ना, तो सर, सेक्शन 7 सर एक्सपोर्ट में तो क्रेडिट मिलेगा ना सर। अभी आपने बोला रिफंड पूरा नहीं मिलता, तो मतलब पूरा आईटीसी भी नहीं मिलता आपको। अरे पूरा Section रेट मिलता है। सर आईटीसी तो पूरा मिलता है ना। एग्जाम्प्ट सर्विस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई एज पर आईजीएसटी एक्ट। ये सारा टैक्स अवॉइडेंस है, अरेस्ट के पावर्स है हमारे पास। सर आप ऐसे बार बार अरेस्ट की धमकी नहीं दे सकते हैं। बस करो, अरेस्ट करो इसको, धमकी मत दो। सर ये अंडर वैल्यूएशन का 5.5 करोड़ का लाइबिलिटी बनता है जिन्होंने भरा नहीं है सर। 5.5 करोड़ रुपए बनता है। यस सर। लास्ट मंथ में इनका आया था ना, मस्जिद का ईमेल आया था ना, सर वो जगह लगते हैं सर। उनका मेल आया था ना, वो सर्कुलर बनता है डिपार्टमेंट का। सर्कुलर आया सर। सर्कुलर में लिखा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी में आप कोई भी वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रूल 28 में डेफिनेशन डाला हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपकी ढोलदास को रिफंड मिलता है तो पूरा 6 लाख माल सप्लाई कर देते हैं, जब आप रिफंड मिलता है आपको तो। सर वो तो हमारे बीच का अंडरस्टैंडिंग है सर, आप थोड़ी बिजनेस टर्म्स डिक्टेट कर सकते हो यहाँ पे। हम लॉ डिक्टेट करेंगे आपको क्या करना है, आपको उसके सब काम करना है। तो सर सर्कुलर तो मांगोगे ना डिपार्टमेंट सर का। आपका बोर्ड का सर्कुलर है मेरा सर इतना नहीं है, वो किसी और इशू के कोई कमिश्नर मुझसे पूछा तो बता उसने। आंसर ले लो और ऐड कर दिया सर, चलन ऐड कर दिया जज का सर। नाम बता दो, धीरज जितना 5.5 करोड़ का। और एक मिला सर, ये फैक्ट्री शेड पे लोगों ने आईटीसी लिया है सर 4 करोड़। अच्छा फैक्ट्री शेड। एसपी शेड ना, वो तो मूवेबल है सर। चलो ये करते हैं, चलो। हाँ भाई, अरे नेट बोल्ट पे है सर। सर सिरपुर पेपर में लिखा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मिनिमल डैमेजेस अगर कोई भी चीज कहीं पे मूव हो सकती है तो दैट इज अ मूवेबल। ऐसा है। मूवेबल पे प्राइस सर ऐसा ही जजमेंट है सर पूरा। धीरज सर एक काम करो, बाजू के हार्डवेयर से एक पाना मंगाओ, इनको दो, सारे नट बोल्ट खुलवाओ, उसके बाद अगर शेड मूव कर पाए तो ठीक है, शिफ्ट पेपर में सब बेनिफिट दे देना इनको। जो नहीं हिला पाए शेड को, रिमूव कर दे बस। इसके अलावा इसका कर्नाटक का एआरबी है विवाद के केस में कि मूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट मिलेगा। आप कर्नाटक में बैठे हैं, सर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का है यार, नहीं है ना? इससे क्या फर्क बस पड़ता है, नहीं होगा। इसको तो अप्लाई करेंगे ना। नहीं, एडवांस होने खाली उनके ऊपर लगती है, हमारे पे नहीं लगती है। आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो। तो हमारी को नहीं होती है। नहीं, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका आपको। धीरज धीरज ऐड करो। ईवर वाले सर्विस दे रहे हैं आपको, अलग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलन में ऐड कर लिया सर 4 करोड़। ऐड कर दो इसको। अभी भी ये कितना भर रहा है? कितना भरेंगे आप बताइए। सर ये तो सब वैसे ही लिटिगेशन के मैटर सर आप इसका जवाब देंगे आप ये बताओ कब तक भरोगे टैक्स? सर 3 दिन में। 3 दिन में जवाब दे देंगे। अभी तक- ऐसा नहीं होगा। 3 दिन में जवाब दे देंगे। नोट करो, 3 दिन में जवाब में टैक्स भरेंगे ये। ओके पहले सर। जवाब देंगे। आज जवाब में टैक्स भरेंगे। सर ये सीएसआर एक्टिविटी में 2 करोड़ का आईटीसी ले चुके हैं लोग। ये सर क्या है? ये सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी उसका मिलता है सर, लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया कि नहीं मिलेगा, उसके पहले के 5 साल में सीएसआर का आईटीसी मिलता था सर। तो फिर इनकम टैक्स में डिडक्शन लेते हो? इनकम टैक्स में नहीं लेते सर, एसएल प्रोपेक का असिस्टेंट का एक जजमेंट है। आप महेश जी का कौन सा कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या उस बिजनेस एक्सपेंडिचर? लगाओ ना, मैं इसको लगा लो यार। तो महेश जी को बुलाओ। अगर बिजनेस एक्सपेंस नहीं है तो फिर आईटीसी का आएगा। ये तो 2 मिनट में बताया था महेश जी को, बुला पूछते हैं नहीं, इनकम टैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता ना। इनकम टैक्स में नहीं मिलता।
बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है ना वो। स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, आपको नहीं रिस्ट्रिक्शन है। अरे आपको बता रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं मिलता है बिजनेस एक्सपेंडिचर आपको। तो सेक्शन 16 में आपको किसका आईटीसी मिलता है आपको? और अमेंडमेंट किया ना हमने, बताओ सर वो तो अमेंडमेंट तो प्रोस्पेक्टिव है ना सर, अमेंडमेंट है पिछला उसको पहले से का सेक्शन 16 में लिखा हुआ है जो भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा वही मिलेगा। वो तो मिलकोर का एक कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है ना कि आप कर्नाटक में बैठे हो, कर्नाटक में नहीं बैठे हो ना, यहाँ के स्टेट जीएसटी लॉ में लिखा नहीं मिलेगा वो। सर वो तो लास्ट ईयर ही आया, प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है सर, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आप लोग ये टैक्स में मानते नहीं, इस तरह से हमको लिखना पड़ा उसको जानबूझ के, मिलता तो स्टार्ट से नहीं है वो। सर ऐड कर ले, आप आगे बढ़ ले। अरे आप भी है ना जेल में काफी अपने हाँ पास सर, आते हो, पढ़ना मत तो यार। जजमेंट है सर, खूब सारे ईमेल में निकाल अरे वो द्वारी केस का जजमेंट बताओ। द्वारी केस का आपका सर वो तो एडवांस रूलिंग होगा, हमारे को नहीं लगता, अभी तो आपने 5 मिनट पहले बोला। लेकिन आपको आपने लिया एडवांस रूलिंग आपको मिलता है? नहीं वो नहीं है सर, बट आपने लिया एडवांस रूलिंग सर एडवांस रूलिंग तो जो अप्लाई करता है उस पे लगेगा ना। तो आपने अप्लाई किया एडवांस रूलिंग के लिए? तो सर फैक्ट्री शेड में तो मेरे फेवर का एडवांस रूलिंग होगा। आपने अप्लाई किया है? नहीं किया ना, तो नहीं लिया तो नहीं मिलेगा अरे बस। ये सारा आईटीसी रिवर्स करो। ऐड कर ले सर। अरे सर डीआरसी से बना दो विजय सर आप ऐसे कोर्ट में रिकवरी नहीं करवा सकते हो, भूमि एसोसिएट का गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है और आपका सर्कुलर भी आया हुआ सीबीआईसी का, आप मेरे से पेमेंट नहीं करवा सकते हम रिकवरी नहीं कर रहे, रिवर्स कर रहे हैं आईटीसी। दोनों फर्क होता है। सर रिवर्स सर, अच्छा एक काम करो, सुनो धीरज, लैपटॉप इनको दे दो, ये कुछ चला वॉलंटरी करेंगे, हम नहीं करवाना। हम नहीं बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। इनको दे दो लैपटॉप, ये बनाएगा। देखो यार, कोर्ट रिकवरी नहीं हो सकता है सर, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, सीबीआईसी का सर्कुलर है कि उनका कोर्ट कोई भी रिकवरी नहीं हो सकती है। रिकवरी हम करते नहीं, आप स्पॉट आप वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं, रिकवरी पेमेंट समझते हैं फर्क वॉलंटरी में। आप वॉलंटरी स्टेटमेंट दे देना, हमसे कुछ बुलाया आपसे तो कुछ भी कर रहे हैं सर, कुछ भी इनका एक तो पेपर मेरे जो को हुआ, खाना खाने नहीं दिया हुआ है सर तब से मैं। अरे खाना आया नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी आ सर जाएगा, मैं परेशान हो गया और रात के 2 बज गए हैं सर, खाना बना लो। अभी आ जाएगा खाना आपको। आपने कुछ सुनते नहीं हो, तब से मैं बोल रहा हूँ खाना मंगा दो, खाना मंगा दो, खाने को नहीं दिए। कोई भी है अपने फेवर में तो ये सबसे एप्लीकेबल है, मेरे फेवर में तो ये गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट यहाँ नहीं लगेंगे, कर्नाटक में लगेगा, कर्नाटक में लगेगा। एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करते हो उसको बोलते हो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, प्रोस्पेक्टिव को रेट्रोस्पेक्टिव करते हो, कभी कोई सर्कुलर इशू कर देते हो। समझ में नहीं आता है सब क्या मेरे जोना सुनना मिर्गी लगे, मिर्गी आवाज क्या है आराम से। इसको कुछ बोलना नहीं। सॉरी ऐसा सीए आदत होता है इन लोगों को, ज्यादा बड़ा काम करने ऐसे परेशान होने का। 18 साल की उम्र से इंस्टीट्यूट आदत दे के रखी, रात रात में पढ़ो, प्रेशर में काम करो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, हम रिजल्ट नहीं देंगे। देखो अमेंडमेंट कब देते सर, 31 तारीख को अमेंडमेंट देते, 1 तारीख से एप्लीकेबल है। हमने आदत नहीं की इनको, सर टेंशन मत लो आप, होना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सर खाना मंगा लेते हैं। खाना हम मंगा 7 साल में 15 अमेंडमेंट के ऐसा कुछ हुआ इनको नहीं हुआ। खाना मंगा ले, सब्जी लिया है, सबके लिए आ रहा है। खा लो भैया, अरे भूख लग जाएगी, चलो खा लो, थोड़ा खा लो फटाफट, निपटा के 5 मिनट चालू करेंगे फिर, ठीक है ना, 10 मिनट में। चलो भाई आराम ले लो तुम भी यार, इतना टेंशन मत लिया करो यार, सीए पास होगा अब क्या है। ज्यादा प्रेशर हो ना, इससे आपको लॉकडाउन की बात करवाते हैं, क्या टेंशन लेते हो। अभी एक दो क्वेश्चन और बस फिर आ जाएगा आपको, गरम गरम आपको मंगाने खाना, ठीक है ना। सर एक बिल मिला है हाँ 26 जनवरी का, 26 जनवरी को बोनस लिमिटेड है कि बोनस है सर, ये पिन नंबर देखो ना अपना, पिछले लाओ तो ये नोट्स। 10 करोड़ का कुछ आईटीसी लिया है कौन बात एक बार मैं नोट जिस दिन चेक कर लेता हूँ। एक कौन है बोनस लिमिटेड? नहीं सर बिल्कुल नहीं मालूम। सर 10 करोड़ का अच्छा हाँ, समझ में आया। अरे कुछ खा चला भाई, ये ट्रांजैक्शन क्या किया आपने इसके बोनस कर में? अरे 10.5 कितना करोड़ बना, 10 करोड़ का आईटीसी 10 करोड़ का आईटीसी या टर्नओवर है। आईसीआईसीआई चलिए ये बोनस कौन? वो सर वही लास्ट मंथ हम लोगों ने रेट मारा था ना,
वो वही बोनस है जिसने डिक्लेयर किया कि वो हवाला ट्रांजैक्शन देता है, और वो अभी तो अंदर है। वो एक कार्टन में जो बिल बुक करके रखा था। वही पूरा बुकलेट लेके बैठता है बिल फाड़ने के लिए। मेरे सप्लायर के बोलने से मेरा ट्रांजैक्शन बोगस नहीं होता है। अभी सनक्राफ्ट का भी जजमेंट है, ऐसा कोई सप्लायर के बोलने से मेरा अरे धीरज, सनक्राफ्ट का कुएं पे आया है। कायदा बता रहे हैं अपने को। नहीं ऐसा कुछ क्या बताएंगे, चलो सर। सनक्राफ्ट का कुएं पे आया है, हम केआईटीसी में लगाते हैं। अरे सर, आप सप्लायर के बोलने से मेरा आईटीसी नहीं होता है। शैलेंद्र जी ये पक्का अंदर है, अभी आपका नंबर है। अरे सर सेक्शन 16(2) के हिसाब से अगर मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मेरा जेन्युइन ट्रांजैक्शन है ना। सेक्शन तो 16 मैं आपको रिसीट दिखाता हूँ ना। अरे अपना वो एक काम करो, एलआर दिखा 16(2) का सेकंड कंडीशन प्रूफ करो, आपको गुड्स मिला है। हाँ, एविडेंस दिखाओ, स्टॉक में नहीं है। गुड्स दिखाओ मुझे। नहीं अरे आपको तो नीचे लेके चला गया। कहाँ से मशीन जब आया नहीं, कुछ गुड्स दिखाओ मुझे, कुछ मिला अरे आपको। आपसे चलने की क्या, हम लोग क्या वीडियोग्राफी बनाए वहां से लेके यहाँ तक का कि कुछ चल के है। वो हमको नहीं मालूम। सेक्शन 155 लिखा हुआ है, बर्डन टू प्रूव एलिजिबिलिटी आईटीसी आपके ऊपर है। ईवे बिल बताओ, ईवे बिल बताओ। ईमेल बता। आज देखो ऑटो रिक्शा का मिलेगा ये बिल। देखो रखा है क्या? शैलेंद्र, पूरा जो आईटीसी ले रहा हूँ ना, उसका बर्डन आपके ऊपर है, प्लीज बैठो। सर ये ईवे बिल पे तो टू व्हीलर का नंबर आ रहा है। अरे वापस कोई मैडम ने गलती कर दिया होगा। अरे आप तो सही व्हीकल नंबर बताओ आप। आपने गलत डाला है तो बता नहीं मुझे। ये बराबर है, इनवॉइस नंबर भी मैच हो रहा मैंने है। लिखा था ना, ट्रक नंबर लिखा दो आप जरा। नहीं ये टू व्हीलर है सर, निकाला। स्कूटर का नंबर। आपका ट्रक नंबर भी था तो भी फास्टैग से ट्रैक कर लेते कहाँ गया है। सीएफओ बताओ इसके बारे में सर ये तो क्या करेंगे। बताओ सीएफओ टैक्स हेड। 5 करोड़ के ऊपर अरेस्ट कर। बस चलिए, मेमो रेडी हो गया। 5.5 करोड़ जरा आपका सीन वाली उसमें अलग करते हैं। वो कहाँ चले? ये हिसाब से नहीं आ रहा है सर। सर तबीयत खराब सकती है। आ रहा है सर। खाली पानी धीरज, सर अभी पानी पिया ना साथ में जाओ। हैं? अरे सर उसको झाड़ू दो यार। मैं चलन बनाता सर ये भर दिया, DRC 03 भर दिया सर, 5.5 करोड़ रुपए। भर दिया ना? वॉलंटरी भर दिया सर, 5.5। कैश में भर दिया। नहीं आईटीसी पड़ा था सर उससे। अरे हमने कैश में बताया वो आपको। नहीं होता है। इधर एक काम करो, ये डीआरसी को बाकी भर डिमांड दिया है फैक्ट्री शेड वाला एडजस्ट कर दो। सर, वो तो सर लिटिगेशन वाला है ना सर, उससे हम रिप्लाई कर देंगे सर आपको। आप उसमें रिप्लाई में अपलोड कर देना। इधर इनका बैंक में कितना बैलेंस है? 3.5 करोड़ है सर। 3.5 करोड़ ना, 50 यहाँ पे मिला है 4 करोड़। वो उनको चला बता दो। कैश सुनो सर कैश में जब डिपॉजिट करो, डीआरसी में बनाना, डीआरसी कल बनाएंगे ओके सर, वो रिफंड ले लेंगे फिर कैश सर में। DRC तो भर दिया ना, DRC भरा दिया ना। ट्रांजैक्शन में ब्लॉक करने को इनका ओके सर भर दिया ना DRC 5.5 करोड़ वो रुपए। इससे देगा ये हमको कैश मैंने में इनवॉइस नंबर डाल के बने सर प्रॉपर इरेगुलर आईटीसी ऑफिस इनवॉइस। इरेगुलर आईटीसी। नीरज, इनकम टैक्स में उनको बताना, एडिशन कराएंगे इनका। कौन सा सेक्शन नया है? 31 कौन सा है? डबल एस में ए, उसमें लिखा है ना तो बात ठीक बराबर लिखा है ना। वो एक्सेप्ट करके अपने इरेगुलर आईटीसी है। ये डीआरसी में तो आप नंबर भी डाल दिया है सर इनवॉइस नंबर वगैरह सब डाला है ना? हाँ। 5.5 करोड़ का। नहीं अभी अभी आपको अभी डाला ना, अभी आपको देखते इनकम टैक्स कैसे डालता हूँ। इनका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है? इनकम टैक्स में इनको पूरा पेनल्टी लगाएंगे 100% ट्रांजैक्शन वैल्यू का। इनवॉइस वाली तो ये 100 करोड़ के आजू बाजू। बस सर 100 करोड़ की पेनल्टी भरना भैया तू। अभी मजा आएगा। इनवॉइस वाले डाला ना, टैक्स अमाउंट है। यहाँ से तो निपटो बात से। अभी आएंगे निपटाने के लिए उनको भी। सर भर दिया ना अभी, और क्या है सर, 4.5 करोड़ 5.5 करोड़ में भर दिया। बाकी का कभी भरोगे। सर आगे का सर 3 दिन में तो इरेगुलर आईटीसी के अंदर रिप्लाई कर देंगे सर, 3 दिन में रिप्लाई कर देंगे। आपका 10 करोड़ का आईटीसी, 10 करोड़ का पेनल्टी, 2 करोड़ 40 लाख का इंटरेस्ट हो गया है, 22 करोड़ 40 लाख है, 5.5 भरा है। अभी बैलेंस करूंगा मैं तो आपको। सर वो तो सर 132 जो है वो खाली टैक्स ड्यूज पे लगता है, उसमें लिखा हुआ है 5 करोड़ के ऊपर टैक्स ड्यूज, उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी काउंट नहीं होता है। सब होगा आप ऐसे हमको थ्रेटन नहीं कर सकते और ऐसे थ्रेटन मत करो, उठाओ इनको। सर ये बराबर बोल रहा है वैसे वो मैंने आप टैक्स का ही है। हाँ देखो ये भी एग्री कर रहा है सर। सर आप बंदा आपके लिए agree आपका कर रहा है। ऑफिसर बोल रहा है सर नहीं, बराबर है, बाकी सब तो कर लेते हैं। ठीक है। हाँ सर हो गया ना सर, तो 4 बज गए सर सुबह के, प्लीज घर जाना। अच्छा सारे डॉक्यूमेंट ले लो। यस सर। हाँ अभी खाना आएगा। बस अभी हो ही गया ना अभी तो। कोई पेपर छूट ना जाए, सब रिकॉर्ड पे ले लो। तो हार्ड डिस्क में मेरा पुराना सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग है सर। हाँ वो सब मिल जाएगा।
धीरे वो कैश का क्या किया? कैश इधर रखा है सर, सर अभी क्या वो जमा करने बोलेंगे बैंक जाने में टाइम लगेगा सर, थोड़ा अभी क्या आते फिर निकलेंगे ना जाने के लिए ऑफिस जाने अभी रात को मिलेगा नहीं बाहर कुछ एक एक सर बाकी का भी तो 3-7.5 बाकी है टैक्स का अरेस्ट कर देता ना, ये तो सुबह ही देंगे इनको। तो अरेस्ट नहीं हो सकता ना सर, अभी तो बोला इसने। अरे वो सब चीजों में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, तो 5.5 करोड़ रुपए हमने भर दिए हैं। ऑफेंस कितने का सर बात कर? नहीं, 10 करोड़ का। और फिर तो 5.5 करोड़ रुपए भर दिए ना सर, 4.5 करोड़ ही बाकी है ना तो। 5 के ऊपर होगा तो अरेस्ट करोगे ना सर? अरेस्ट हम आपको 2 करोड़ के ऊपर भी कर सकते हैं, बेल वो आपको बेल है। हाँ तो बेल तो देंगे आपको, तो बेल एक्सेप्ट करवा लेना, बेल ले ले। बेल ऑफिस में देंगे ना सर इनको। स्टेटमेंट बराबर ले लिया? नहीं ऑफिस में नहीं सर, बेल इधर है। स्टेटमेंट का प्रिंट दो, स्टेटमेंट दो। श्योरिटी लाओ, बेल चाहिए श्योरिटी लाओ अभी। सर अभी सुबह 4 बजे कहाँ से श्योरिटी लाओ? बस स्टेटमेंट आप जब श्योरिटी लाओगे तभी आपको बेल दूंगा मैं। विटनेस को दे दो, इनको भी दे दो। ये लो। सर मेरे को गलती नहीं है, मेरे को तो ट्रांजैक्शन नहीं मालूम सर। टैक्स इनके नाम से भराना, मेरे को नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। मैं तो नौकरी है। मैं रेजिग्नेशन कर रहा है सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। अमेंडमेंट टू टैक्स इवेशन चार्ज लगाओ। सर मेरे को थोड़ी सर उसके मेरे को थोड़ी सा पैसा मिला है। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देख लो सर, उनको बता दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट साइन कीजिए, चलिए अब अंदर। जब श्योरिटी आएगी आपकी बेल की तब इधर जाना मिलेगा आपको। सर एक बार 8 पेज का पेट आराम से इसको इतना में 2 पढ़ ले, आराम से पढ़ के आए। 2 मिनट में आराम से पढ़ लो। 2 मिनट में कैसे पढ़ेंगे? अरे पढ़ लिया देखो। सर वो ये 5.5 करोड़ से 55 करोड़ दे दिया सर। 55 करोड़ कहते हैं बाबा दिनेश को। अरे वो सर एक हिंदी रहेगा। अरे क्या बिल्कुल देगा, हिंदी में बिल्कुल छोड़ दिया तू भाई। पिछला रिकवरी नहीं करने का अपने को, नया लगा दे बीच में। ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? तो दूसरा वो बाल भी आ गया सर। हाँ। चलो फटाफट साइन कीजिए, आप साइन कर मैं पढ़ लूं एक बार। साइन आप करने वाले हैं देखिए। अरे सर उसको पढ़ने दो पहले, वो समझते हैं। पढ़ा नहीं है मैंने सर, आप पढ़ लो। आप पढ़ लो आपने तो टाइप किया अभी, चलिए फटाफट कीजिए इसको। सर एक पंचनामा भी रेडी है सर। हाँ अरे वो पंच किधर? अरे पंच, अरे आओ इधर गुड मॉर्निंग, आइए आइए इधर इधर आओ। ये वापस साइन कर दीजिए, रेडी कंप्लीट हो गई है। इनको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, आपको सामने पढ़ना पड़ेगा। इसका एक कॉपी दे देंगे सर स्टेटमेंट का हमको। हाँ मिलेगा ना, चाहे कॉपी सब मिलेगी आपको सर वो लास्ट टाइम स्टेट वालों ने भी नहीं दिया था, फिर आप वापस आ गए, अभी कोई और आ जाएगा तो। वो डिमांड नोटिस आपको कॉपी मिलेगी अभी आपको। सर वो सर्च वारंट का कॉपी भी नहीं दिया है सर। ये हमारे कॉपी नहीं मिलता है। इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको नहीं मिलेगी। सर इन्वेस्टिगेशन पंचनामा का ये लो इसका फोटो निकालो, कॉपी कल आके ले लेना ऑफिस से। सर ये तो ओरिजिनल दे दो पंचनामा तो। अरे एक ही लाइन कागज कॉपी लेके नहीं आए थे यार, आप ले लो फोटो, ले लो आप इसका। कागज ना भूल गए यार। सर वो डॉक्यूमेंट का रिसीट सर। हाँ वो देख कल ऑफिस में आ जाना। कल आ जाना, कल सुबह आ जाना, कितना 10 बजे आ जाओगे? तो अभी बच गए सर। आज 4 घंटे सो के आ जाना। ऐसा कुछ खाया भी नहीं कल से कुछ। अरे 4 घंटे से कितना देर तक खाएगा ये? या घर जाके खाना। देखो घर जाके खाना, सुबह 10 बजे आ जाना, 12 बजे चालू करेंगे हम आपका वापस स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? अभी सर इनको ले चलते हैं साथ में, मुंबई भेज देंगे सर। हम तो प्रेशर किया बोल यार, बेल तो दिलवा। बिल मिल जाएगा सर। श्योरिटी लाओ के जाओ। सर अभी 5 बजे कैसे श्योरिटी लाओ? वो कल ऑफिस में आना, श्योरिटी इनको लेके जाता हूं। ले लेना श्योरिटी यार। श्योरिटी सर। उसको श्योरिटी बना ले। आप दे रहे हैं इनका श्योरिटी, समझ के देना। ये क्या कर रहे हैं टैक्स इवेजन? अरे मैं तो जा रहा हूँ घर पे। ये आप स्पॉट में तो आपको भी लेके जाऊंगा अंदर, नहीं दे रहे वो। पंच का सर तो बुला लेता हूँ, किशोर को बुला लेता हूँ सर 2 मिनट में। आप हम तो लेके जा रहे हैं, खुदा ढूंढो बेटा, आज बुलाओ। टेंशन नहीं लो भाई, अभी तुम लोगों ने पैसा भर दिया है, बाकी का तुरंत रिप्लाई भी दो और पैसा। अरे वो बोल रहे अरेस्ट करेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं। चलो सर 5.5 करोड़ भर दिया ना सर, अभी कल का अरेस्ट। अरेस्ट गाय का अरेस्ट, आपको डालू अंदर और नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अब टू टैक्स इवेजन डालेंगे, आपको मालूम है ना 100 करोड़ के ऊपर अरेस्ट हो सकते हैं आप। सॉरी सर, बेल आपका राइट है, लेकिन आपको बेल अमाउंट देना पड़ेगा यहाँ पर। सॉरी सर, सॉरी। चलो चलो सुनीता अपन वाइंड अप करो। हाँ सर, इनको अरेस्ट किया सर, इनको घर में फोन करवा देंगे इनको। बोलो ना सर, क्या सर? हाँ तो फोन किसको फोन करेंगे? दे दो ना। नहीं वो आप श्योरिटी दीजिए, बेल अमाउंट दीजिए, ऑफिस में करेंगे। चलो बेल बॉन्ड लेके आइए आप। मैं 10 बजे आता हूँ बस। 10 बजे लेके आएंगे इनका बेल बॉन्ड। चलो चलो। आपका फोन करने की जरूरत नहीं है, इनको बता दिया ना आप अरेस्ट हो रहे हैं। नहीं फोन तो कर सकते हैं ना सर, वो आप फैमिली को। बता दिए ना आपको, आपके आपको अभी तो बता दिया। चलो कर दो, फैमिली को कर दो, आपकी इच्छा हो तो। और वो अरेस्ट पेपर का कॉपी भी उनको बता दो। हाँ
अरेस्ट कर लो वो बेल बॉन्ड लिया ना सुबह वो क्या था आप बताना घर का नंबर है ना आपके पास हाँ आप बता देना घर पे अरेस्ट हुए हैं सर आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बात करो। चलो 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 चलिए चलो चलिए मैं सर मेरे को बोनस देना है इस बार। बोनस की बात कर रहे हैं। ये भी बोनस से ट्रांजैक्शन करने वाला है नहीं सर, बोनस मतलब सैलरी का बोनस। अभी सब पता चलेगा। थैंक यू सर। वो नोटिस तैयार करना है एजुकेशन का। वो बेल बॉन्ड के लिए आपका 25 का 10 पड़ा मिनट था हो जाएगा सर। बस वो बैंक में जमा करना 9 बजे तुरंत 10 बजे लेके आ जाना बोनस देंगे क्या सर तुरंत? चलो 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 एप्लीकेशन दे इनको सर लैपटॉप भी लेना है हाँ नहीं मैडम लैपटॉप क्या लैपटॉप ये थोड़ी बात में इतने गया है। वो रसीद भी नहीं दिया, डॉक्यूमेंट का भी रसीद अरे नहीं दिया। टीचर हमारा लैपटॉप लेने का उनका नहीं। ये दिन का रखा हुआ है ना आपका आईडी ले लिया सर आईडी कॉपी कॉपी ले तो लीजिए। कैश कैश कहाँ रखा सर? वो पीछे अरे चेक कर ले यार, कुछ भरोसा नहीं, नहीं देख लो। नहीं जाएगा। आपके खाली ओनर को लेके जा रहे हैं बाकी हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं आपको आपका भी छोड़ के जा रहे हैं थैंक यू थैंक लेके जाओ आपको भी साथ यू। नहीं सर थैंक यू। आजा कंपनी देगी इनको अरे सर थैंक यू। अरे इंक्रीमेंट बात मेरी करेगा हालत खराब हो गई है मैं। अरे मार्च अप्रैल का साथ में दो काम आएगा आपको सॉरी सर। नहीं चाहिए आपको सर चलो जाओ चलो चलो So friends, you have seen the search drama. You've seen the businessman, how his pressure was being built. How we had some pressure and how the CFO was trying to give answers and how we tackled the search. After the break, whatever refreshments you have to have, we will tell you where all the misuses of powers happen, what are the rights of businessmen, where businessmen also made a mistake. That also we will tell you. And your any questions, we will answer. Right? Yeah. Part will still will take up after the break, which is equally important and interesting. Powers हम यूज कर सकते हो या कहाँ excessive power यूज किया जो भी one by one जिसके दिमाग में ध्यान में आया सर बैठ जाओ Yeah. we note each and every query sir Yeah, better. एक आंसर करेंगे Better. तो आपको जहाँ भी गलत लगा, मतलब कि ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, you just let us know and whatever queries you have, we will note it down and at one go we'll answer. Who is noting down there for any question? So आप questions भी पूछ सकते हो और आपका observation भी बता सकते हो कि ये observe किया जो होना चाहिए या नहीं होना। First of all, is a diabetic patient. हाँ. It should have been allowed for the medicines, even for the food also. Good also. Right also. We are just noting down the Yeah, point yeah. what you are raising and one by one we'll give answer the break also and we'll give our observation. One of the hardest of the CC. Right. Good also. Sir, banking password. You need a search. You can't arrest or you can't issue someone immediately. At least you should have given it 12 hours time. Okay, sports summon you are. Suppose someone should allow. This is what I understand. Done sir, we will discuss it. Login ID password sir speak on the mic let everyone hear ये माइक चल yeah This part is not well prepared. See, they have taken cancel witness. See, they are not prepared. This witness was both very good. when did you have witness Homework. Yes, sir search of the house when it is not a registered piece of Oh, okay. So that foul is not permitted. That what you mean? sharing of copies Sharing of documents You can send copy acknowledgement of the acknowledgement of search warrant की copy नहीं दिया. पंचनामा अच्छा warrant और पंचनामा दोनों आपके. impounded document. Okay. Sir, bank statement password is not required. Bank statement password. Transaction password. Right? Transaction and login password are not required. Even the login password is very good. GST law. all the passwords All the passwords. ठीक है, we'll comment. already run by state
Second search. Second It was state already conducted by months back, it's whether it is valid or not. Or they can do or not. So many times it appears that accountant has more knowledge than the officers. सर वो ऐसा ही होता है हमेशा। आपको आपकी टीम को ट्रेन करने की जरूरत है जैसे यू आर जॉइंट कमिश्नर जॉइंट डायरेक्टर I am a member of cabinet statistical. सर ऑफिसर जॉइंट डायरेक्टर ऑफिसर Member of cabinet statistical. Sir, on the basis of name of a company, no one can tell that this company is a Bogus company. is a bogus. Biasness on the basis. they want to go by name Fine. Arrested. to say wrong arrestment Yes. wrong arrest Yes. One by one. where and why wrong arrest you say 5 crore limit. actually Okay. So I think, just a minute, I think CSLH media is here. He's the president of BJP professional cell, Mumbai. So Shailesh bhai, you want to say something? Yes. Yeah. So we'll continue our question answer later, but Shailesh bhai is here, so we will listen to it. And apart from professional cell, president is our member. Our chairman, sir, dignitaries on the dais and friends. थोड़ा मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट ऐसा अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप लोग को सबको मालूम है। सब ये बड़े इलेक्शन आते के पहले एक छोटा इलेक्शन भी आने की संभावना है, वो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी we chartered accountants are सब लोग अनअवेयर मोस्ट ऑफ कि ये क्या ग्रेजुएट भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है क्या? शायद हो सके भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनाने को हमारी अगर ताकत बन जाए तो एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसीज ग्रेजुएट्स elect for the member of legislative council MLC। तो वहां पे एक सीट हर एक प्रांत से हर एक डिस्ट्रिक्ट से होता है। मुंबई का होता है, कोंकण विभाग है, ऐसा पूरे महाराष्ट्र में कुछ 7-8 विभाग है। तो वैसे वो सिलेक्ट होते हैं। तो वो ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट करेंगे। जो बम्बई इलेक्शंस का और इसमें दूसरा एक बात क्या है कि हर टाइम इलेक्शन के टाइम पे ये इनकी वोटर्स रोल बनता है हर नया जैसा अपना नॉर्मल जनरल इलेक्शन में क्या है कि एक ही चलता रहता है, फिर उसमें काट सब होती है वो होता है, लेकिन यहाँ पे हर टाइम नया रोल बनता है। तो हर टाइम नया एनरोलमेंट। तो अभी इलेक्शन ड्यू है उनका, अब तक ऐसा सोचा नहीं गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी ये इलेक्शनों में पार्ट लेवे एज अ वोटर करके। शायद मेरे ख्याल से कई लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो ग्रेजुएट लोगों का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। तो मैंने शायद सोचा ऐसा कि सबसे ज्यादा ग्रेजुएट अगर है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के पास है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी कैन बी अ वेरी लाइक बहुत पावरफुल फोर्स बन सकता है। हमने आज पहले भी देखा, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, लेकिन देखा कि हमारी ताकत क्या है, कुछ नहीं। ताकत यानी हम देश के लिए इतना सहयोग दे रहे हैं, देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना जीएसटी इनकम टैक्स कलेक्शंस के लिए हम इतना कलेक्शन करवा रहे हैं, इतने लोग पढ़ने को बैठते हैं, पढ़ाने को बैठते हैं। वो तो अभी हम लोग क्लाइंट लोग को बोलते हैं पहला पैसा को जीएसटी को, हमारी बिजली नहीं चलता है, लेकिन पहला बोलो जीएसटी को, ऐसा इनकम टैक्स बोलो। हम ऐसा नहीं बोलते नहीं पढ़ने का है, कई प्रोफेशन में ऐसा होता है ना, यूज होता है मत पढ़ो हम लड़ लेंगे, हम ऐसा नहीं बोलते। तो हम इतना काम करते हैं, लेकिन हमारी एक ये होनी चाहिए रिकॉग्निशन, वो नहीं बनी है। तो इसी कारण हमने शायद कुछ सालों पहले या तो हमने हमारा एक इंसेंटिव हुआ, ऐसा भी महसूस हुआ
ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे वोटिंग बैंक नहीं है। हो सकता है मराठा समाज हो, दूसरा ब्राह्मण समाज हो, या तो वो उनके वोटिंग बैंक हो गए, उनमें कोई कैलिबर है नहीं है वो कोई, लेकिन ये वोटिंग बैंक तो उसके बहाने मत लोकशाही में है ना, तो मत्ता गिना जाता है, तो मत्ता गिनने में हम बहुत पीछे हो गए। इसीलिए हम इतना देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारा कोई ज्यादा वैल्यू नहीं बना। तो मेरा ऐसा सोच है, आप लोग भी मेरे साथ में सहमत हो गए कि हम ये एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ पे वोटर्स बने। All the classes are yes, CFO के या any other accountant can have. Okay. Yes, sir. What about the time span? It started at 11 in the morning till 4 o'clock or 5 o'clock in the morning. Okay, so on office hours or 8 hours shall be continued or not? How many days? How many weeks? You know, if you give, you will say, okay, I'll continue for 1 week. No, understood. So we'll cover that one. Witness को allow नहीं करते। सर पंचनामा हो गया, वो विटनेस नहीं है। स्पेशल केस दे देते। बोलिए सर, मेंबर Yeah, rate permission given by the principal commissioner or chief commissioner without authentication of any documents. Casually, they are giving high court and court and given permission. Yes. Good question, Manish. So it is to be given by joint commissioner, that what we have, so we'll discuss that. Yeah. And the signing of the statement, the, so can the SAC ask the officer that I'm not in a mental state right now, I'll come tomorrow to your office in time. Okay. सिक्योरिटी पर्सन जो बात कर रहा है, क्या वो रोक सकता है या उसको कम्युनिकेट करने का उसको राइट है? Okay, so security can stop government also. हाँ, he can be stopped. Understood. Not there, or not to communicate. Yeah. Okay. They come with a particular company name. And if they get other 4 or 5 companies, can they cover that also? Yeah, that question उन्होंने किया ना, कि within the same premises or maybe the. Yeah, group companies. Group companies, etc. That will cover. We'll cover, sir. I have noted the query, we'll cover. Yeah, in process of section 70, they will issue summons against the inquiry of someone else to my party. They are asking all the documents related to my party, like sales, bills and all these things. Not related to that party, but. They are asking for my party also. So the statement is to be given the same day or at the time of the search. What summons क्या है बताइए सर, क्या हम दे सकते हैं, क्या हम Take something, some statement and that same day. वो इन्होंने बोला ना कि same day या बाद में भी statement Yes, taken that. question sir, we'll argue the answer for that. So retractment, Questions because note I कर रहे asked हैं। you about retractment, अगर pressure में लिया है. Yes, किया गया सर। Yeah. So we are just noting down the question as we discussed before the break. सर आपने ही मोबाइल फोन ले लिया, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो So whether they can inform my mobile phone or stop my business. Power both of business. After making DRC 03, can we reverse that here? DRC 03, we will put that. Okay. Power to arrest or they have to go to court. Correct. So we'll cover that also. What is the judicial proceedings and what is that IPC section, all that what will cover. So what is the power and what is the. We'll explain sir. Bonus or bonus party, some problem is there. Can it affect the input credit for the other party? That will cover. See, according to me, in my case, GST is applicable at the 18%. But due to certain technical reason, GST officers feels it is liable at the 28%. As a result of that, they are pressurizing my client and they have visited all the places of my client. Either you declare as a 28%, otherwise we'll search you.
So the issue of classification, and they are saying only that whether you accept or otherwise you will start, sort of your business. Yeah, they rather, in fact, they've already Not direct. visited, they've already visited. Not giving threatening of punishment. Yeah, already they have visited and they are pressurizing for the statement. So, any other question, any other observation, or you found कि whatever power has been exceeded या कहाँ पे क्या mistake की है, anything you can highlight? Okay. Yeah. The prayers were not allowed to be done. That was one observation which was there. Application of mind as someone pointed out. Prayer के लिए stop किया. Application of mind was not allowed. The polls were always asked to be put on speakers. So whether that is allowed privacy, that is invasion of privacy. Of course, people said that polls, etc. was taken. Then even maybe the posting of confessions, etc., which is not allowed. They were posting this thing. Issues in witness also, that also someone's pointed out. That is one issue. Can they, without taking to a magistrate to arrest? That is a very big question. Another important point which I think was here, sometimes the food etc. was not allowed to be in the basic these things. So basically food not allowed. Yes, and the people should be allowed to come and go, as I understand, for important functioning, which they were not allowed to do. And Regular working. regular working. Very good observation. As a MD, I am not aware about all the my purchases party. If like this statement, written statement taken by the officer, then I say, I don't put that officer, I don't put that party, whether officer can consider that part, this is not a genuine purchases and they will think there is a bogus purchase. Noted. I think itself has not been made any preparation for research. And itself is a very basic steps. The department has not done their own work. Good observation. So one more question I have, this is not an observation. A witness was brought by department, but can the assessee ask for more witness to be brought? Noted. Who can be witness and how to select? Sir, grade was conducted only on the basis of ex-employee information. So can that only be the basis for grade or some work on the department part is necessary? Noted that point. What is the role of? We also require. What is the role of? ED. ED. Okay. Can he say that I will do, this promote the another law that sanctions can not be, you were defaulted in the GST, but in the income tax also, in the money laundering act also, and the fair act also. and fair Another law of Information sharing. Right, okay, so we have noted various questions and various observations. So first of all, I will say that काफी अच्छा आप लोगों ने observation किया, really good to note that everybody was awake. So what we will do is we will start one by one answering your question and giving where we have made a mistake. Manish, you want to ask? Yeah, like how many summons we will not attend, summons issued by the officer. So how many summons we will not attend, we will not get any hurdles from the office. What is hurdle? Kejriwal has not attended 4 times. Kejriwal has Sir, he is not Kejriwal, na? The Problem is that. I'm not saying he's Kejriwal or not. I'm saying the student is set. No, understood. Okay, so what we will do is, we will answer one by one all the questions or whatever observation we have made, whatever mistake we have made. First, we will clear that. So most of your questions or observation will be covered in that. अगर भी कुछ छूट जाता है तो one by one, Gautam will keep on keeping a tag which question has been left out. That also will cover. हाँ sir.
GST officers can bring plant there some papers in our website. सर मैं इतने देर से वही ऑब्जर्व कर रहा था इसीलिए ऑब्जर्वेशन किया मैंने How to prevent it? Yes. सर मैं वही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी देर से कि क्वेश्चन क्यों नहीं आया क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने वही किया था क्योंकि पेपर जेब से लेके आए और उस पेपर को देन they started asking the first question was so first I request Deepak bhai to start with the various instructions also issued in interest of search and Deepak bhai. Thank you. See friends, And before Deepak bhai will start, I'll just share one thing is that Deepak bhai is also my guru. Because when I was in Chennai College, he was professor there. So, but he never attended it. Maybe it's for your expert. because of your guidance. Okay, fine. Let me share one more thing. This particular what you observe, the script is drafted by Sumit. And the concept is of Manish. And we give freedom to all actors, whatever they wish, they can say. So I said, misdirected by themselves. And that is right. We have never said you say this or you don't say this. Something spontaneous also come. And today also, they also observed something spontaneous which they were not aware of. Lastly. Okay. See, friends, CPIC, the highest body like CBDT, has given instructions about investigation. And that has to be scrupulously followed by the officers and department. Else action can be taken. First is February 21. Second one, May 22. If something is there, we can share with, and Manish bhai will share with all of you, don't worry. But I'm just trying to draw your attention that where we all took this from. Then it is October 22. So from all these instructions of CBIC, experiencing some cases in the courts, they have drafted the SOP line. And from that, we are now telling you that how and when search can be taken, my colleagues will tell you. But once we have the search warrant, the department takes care that in search warrant, they try to take maximum names and addresses of the companies located or sister concerns, including godown addresses, whatever are within the knowledge of the department from homework and also the residential addresses. By that, we get power to visit the residence also. Nobody can stop. Residence need not be a registered place. But to unearth some secreted document or some information, we go to residence also and we have the powers. Then when we went to residence, we didn't take lady officer, though she was there with us. We took the gent officer. That's an error. At any residence we go, lady officers present must be there, else we cannot enter the residential premises. Then the presence of witnesses. We took one witness. In fact, two witnesses are necessary. So again an error there. Then this particular witnesses must be independent person. We cannot bring somebody with us mentioning everything and all that. So he should be an independent person, respectable inhabitant, preferably from the same locality. So we know that now we want to visit this particular location. So before we enter, you have to search, okay, search some reputable person, known person also. And then, if we don't find nearby some, we can definitely go to other location and get some person, nobody can object.
He can say no, we have to then search another place. Let me share, Officer, they can't force anyone. let me share a real fact of 3 4 months back. We were sitting in office doing our work and suddenly one officer called me saying that I need your 2 staff. I said, why? He said, we are in search here. It was near my office place. And they said that you send your 2 staff and I had to send them. And same way, they said within half an hour we'll release them. And they came in the evening. They were scared so much. Students after doing CA, they got so much experience of, I said, before they went, I said, what is your role? You just sit and watch and everything. And if you feel something, you note down. Yeah. So besides the people brought by department, can the assessor say, I also need independent person to witness it? You can. Minimum 2, there can be 3 also. No. So because then at the time of witness, there could be But he should be independent person. You cannot say my CA will be my, independent person. Yeah. Because we are not sure if the department has got people who are yeah. absolutely independent. But secondly, they have no right to intervene. They cannot intervene like this. So this is also, they have to just see and observe that there is no pressure from either side. Unnecessary, or they will just note down and their statement in the court when needed in future will be of importance. So the officers, when we entered, of a businessman's right is there, they have to, he can ask us that they want to search us. They want to search our bags. Is it that something we have got which we may use against him? Right? Exactly. So this officers, I card and how we flash that issue also. Right? She objected to that also. And rightly so. Nowadays, any fake things are happening and so nobody will today object proper identification and we have to offer the personal search not only before we start the search, even when we leave the premises, ending the search, we have to again offer, just see, we have not taken anything else, whatever we have taken, listed out, receipt maybe. But listing is there, he is aware of what we are taking. On the search document, the sign, time and date of the person to be searched, including witness, is to be obtained on the body of that search. We can't have another paper and say, okay, this is a search, sign it here. No, in the same body of the search. Then Panchnama is the truthful act of proceeding of the search conducted. Offer of personal search, time and date and everything, conclusion should be mentioned. See how meticulous the instructions are given. But businessmen are not aware, the practitioners are not aware. We can guide our client. Give your client the confidence of facing the search. It is a genuine transaction. With businessmen, we need not worry. Businessmen also need not. Here, your businessman was never worried. He was knowing the law, he was knowing the judgments, but cannot happen with all business. Then, in sensitive search, videography can be asked. Whatever was there on, we stopped it. The CCTV of the business premises, we cannot do it. Businessman can object, he objected, rightly said, how we can do this? But we didn't allow him to speak. You're threatening him. So the videography, they can say, sir, we want to do videography. We have to permit. If we feel that he is a person of high contacts, he may give entrance to the department also. Department can also insist for videography, he cannot stop. So these are all, and why, what for all this? To see that the search is carried on in the legal manner, no forceful acceptances are done. No forceful recoveries are done. Then about that prayer, what he was doing, so social and religious sentiments, we respect. We cannot stop. Secondly, the elderly persons are there, say, aged persons there in the office. We have to take the care. On the contrary, the aged person gave us the water.
we should give offering and allow him to be relaxed. The women, if they feel that no, we don't want to answer or we do not come in front of the man, they can say so. But before we allow them to go out, then everything will be searched first and everything by a lady officer. Women want fearful then? Huh? Women is fearful. Then she cannot. So, Once, yeah, he will cover that. once a lady is a proprietor, partner, director, CFO, tax head, she cannot say, no, I will not, I have to go and offer. Then we will not go. Then further, So in our case, then we start for this at least. so we permitted also at the end. This context is given in the sense where the search is conducted at the house and your wife who is not a office bearer in your organization, if as per your religious customs, she does not appear in front of unknown male non-family persons, then they have a right to leave the premises before you enter. And before they leave, their personal bags, search, everything will be done by a lady officer. Certain customs do not allow them to be in front of unknown male persons. So in that context, it's suspension. पहले यहाँ तक रखते थे। Children, we have to allow them to go to school, of course, checking their bags. It should not happen that the pen drive which has the data, it goes with the children. So this all care has to be taken. Then whatever we want to seize, seizing of records, things and so on, we have to prepare a list, copies to be given to the businessman also, and times and everything is to be mentioned. And the fact of this has to be there in Panchnama. Which we did not do all this. We said, take it, that's it. He is not aware of also what we have taken and what we will then further put questions based on. Then about cash seizure is not to be listed, taken on record, jewelry, valuables, to be listed, taken on record. Passing on information may happen at other department, to other department. इनके मामा थे, मामा को बोल ये सब है पाँच रिकॉर्ड पे क्या है क्या नहीं देख लो बैलेंस शीट हमको नहीं मालूम. He said CFO knows more law, rightly so. The officer's role is to achieve the target. You know that investigation officer never keeps the law book on their table. They are the law. That's what they said also. We are making law. Right? Secondly, about the statement. We can give spot summons. Yes, we can give spot summons. Right? Because tomorrow we do not know. Today we have casualty of the businessman, MD. Tomorrow he may abscond. When will we take the statement? Once the statement is started, it has to be concluded. Maybe partial, no problem. You can say next day or maybe next time. Second summons. But he has to sign. He cannot object to that. If something is answered by him, we write something else, can object. Right? We told him that, okay, we'll see in 2 minutes, 8 pages. How one can, right? So, but this particular statement has to be signed by him. If he refuses, we will take this on record. Punch is there. He will also say witness, yes, he gave these answers which are recorded, but he refused to sign. To be recorded. Then can the summons be issued to CFO, CEO, general manager or MDs? Answer is yes, why not? But in instruction it is said it should be sparingly used. No excessiveness on the taxpayer. Initial stages, not to call them. Once you are in charge of that particular, suppose we are asking something related to inward purchase transactions expenses. Then this particular question, if we ask to marketing person, that's not proper. Businessman very well can say that this is handled by my purchasing, he will answer them. I need not be aware of all the suppliers. I'm here to have a policy decisions, do the business. Not everything he should know. Rightly, the CFO was telling him, if you know, say. If you don't know, don't say. Rightly so.
And as a MD also, I can say that purchase is looked after by this person, operations are this person, marketing is this person, CFO. So you take a statement of that person in respect of that matter. That also, as a MD, you can say. It is not mandatory, it is not compulsory for MD to answer all the questions that what CFO has prompted on. But whatever you are saying has to be correct. You can't give any wrong answer. That needs to be taken. That's why it is already left for the department. We will issue summons later. Someone and all at the office. Okay. Secondly, about okay, repeated summons to be avoided. Then about payments, whether voluntary or recovery by force, that my colleagues will tell you. About the hearing officers not following all such instructions given in black and white. Businessman can write a complaint against that officer, and the department commissioner can take action. This is that action. Sorry. What action? What action? He can transfer that officer from investigation to Andaman Nicobar. I mean, without Suspend also. suspend action. Court has even put cost on those officers. Personal penalty also has been put and From their yeah. Can be called. Court has all the power to call anyone there, even Arvind Kejriwal. Okay, about search by the state and center, simultaneous answer is no. He said that 2 months back, 3 months back, somebody came from State Department and they searched something. They have also made them pay some amounts and all that. But they didn't have evidence. What to do? When you have a notice, show that. In notice mentioned that, okay, what aspects covered, what branches covered, what issues asked, and based on that, what actions taken, and on what you agreed, what you paid, what is objected, your written communications. You don't have anything, then every again thing can be taken care by the other department, central. And if he does not have anything, the suggestion to such businessmen will be, on their own, they should write the letter to the department, whosoever has come after 2-3 days, and they should say that the so and so team, so and so person from this department visited on this date, time, for a day or two, they were there, asked for these things, even shared the documents also, and thereafter there is no notice. Or a notice was there, we have given answer, yeah, then there is no further proceeding. If this is also there, take an acknowledgement, this is your record. You may not have anything other than, and how can be by speed post also, email also. If personally refuses to sign, nobody can refuse to sign. Even in bad era, commissioner has issued one circular also. Any letter given by any person has to be examined. Right? So this is all administrative things. So whosoever will initiate the proceeding of search will conclude this till assessment order. So notice, opportunity and assessment order. Thereafter appeals and all that can happen. But the team who has initiated for certain aspects state took cognizance of other aspects. Now central has come, you can't say you cannot enter. They can, but for different aspects, different transactions, or different businesses and all. And finally about the arrest, I would like to. Sir, name of the businessman wrongly recorded as in Rajendra. In the search warrant? Summons. Of course, then to Shailendra and Rajendra, and we can't do that. If it is Shailendra, we should have everything properly written. Even if some say surname is wrong, we'll have to get another search warrant from the department. 1 or 2 inspectors are there, ready with. I telephone, get this, we will bring it in Aben. Some companies may be later on realize, you can immediately ask them this also need to be, we can call.
Can witness raise such a question? Witness has to just witness the Witness is just observe. It's just, He can note down some things if he observes something that we didn't allow food, we didn't allow medicine, we didn't allow some persons to go. Right? Then, Sir, just now you said the person has started the search. He has to conclude the search, assessment, correct? not that person, that department, That department. That- Acha. It may take another 3 years also. whatever. Yeah. but that team, That thing. Acha. it means different. team, Jurisdiction, they are- jurisdiction. Transfer maybe the officer of the team. Transfer of proceedings can also happen, but center then center, state then state. Okay. If something is already done, everything by state showing that, and these things have happened in some of our cases. We showed that central has been left, or vice versa. About Wrong name also they can proceed. no, wrong name I have to call for, we have to leave the premise. Till that time they have no authority. No? They need authority to enter any business premise. There is illegal search. Illegal. Okay, about arrest, I'll say, take 2 minutes and then pass on to my colleagues. Personal liberty is constitutional. Arrest only if custodial investigation is necessary or crime is heinous. Right? How heinous? He was having regular business, turnover, regular returns, 2-3 months, return was under computation and all that. Genuine things. But say another person is there, he's just sitting with bill books. Anybody can go and say, give me cement bill? Yes. Give me steel bill? Yes. If such person place is visited, this crime can be immediately taken behind bars. Then possibility to influence, when arrest will happen, possibility to influence the witnesses. Right? I can say that witness को ऐसा बोलना, ऐसा मत बोलना. So, नहीं चलता है. Whatever is observed, he is observed. When the question is put up by the court, he will answer to that. Right? That is why it said independent, reputed and all. इसको भी लाके बैठा दे सकते. Then, if we feel that accused may abscond, or else the arrest is then not compulsory. If issue is such, we say that पे करो, नहीं तो arrest करेंगे, powers है ये है वो है. वो बोल रहा है, तो CSR में ITC मिलता है कि नहीं मिलता, हम दूसरे लॉ का बोल देते हैं और उसको डराते हैं. वो जजमेंट बोल रहा है, बोले कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का नहीं. ये सर्कुलर है, कुछ हम सुनते नहीं, देखते नहीं, वो नहीं चले. If interpretation issue is there, arrest is not there. Where arrest is there? So these are all the things which I thought to put for you. Thank you. Let my colleagues. I am reputed person. But in your case, you got to be Jaipuri wala. Problem. You said, तो businessman को objection लेना चाहिए ना, हम क्या करेंगे? Sir, that's what he said. उसके पास तो line लगती है. That is reputed Velpuri wala. Never repeated. अरे यार लेडीज लोगों को पूछो तुरंत नहीं अच्छा है वो गलत पर है. Not permanent. Very permanent. No. Understood. That's what we are saying. It has to be reputed. Reputed That's person. what we said. Many mistakes we have done in our search. That was the. But वो business में इतने pressure में होता है ना, इसको नहीं सकते. So sir, nothing to offend. He is a reputed chartered accountant. Don't take it too personal. So only for the humor we have said कि Velpuri wala. Otherwise, he is a reputed person. Sir, to create this search, even though you look at tax officers, the same way he has become a Velpuri wala. That's it, like. And by the evening time, don't call Rahul. And say Velpuri देते. Yeah, he's our colleague after all. Yes, it's a very dear. In case of multiple location of a single SSC being searched, has the witness to be accompanied on all the locations from the commencement till the conclusion of this? And Maybe different witnesses. Different. Say 4 places are there, our 4 teams will go there. And total 8 witnesses will be there. 2. Who witness at each place.
Yeah. And the Panchnama for all the places has to be made simultaneously all. But every every search premises will have independent and separate. Yeah. Every search will have search volume. The investigation officer cannot give without giving, if he goes, then he cannot give later on. He has to give before giving. If he has gone, then gone forever. और हमने यहाँ पे कुछ भी बोला होगा डायलॉग, don't take it personal. Because this is only just some. Initially only we have said it is fictional. It is fictional and many things we have noted just only for the humor, not to offend somebody, but monotonous life होना चाहिए to make it light. Yes. Also search for the name of officer who will be. That will cover. That's well. No, sir, we'll cover. Sir, We have noted that question. Fine. Yeah. So we have not concluded. Some question Sumit will ask. Some answers you get it I will answer, some he will answer. Both of all of six will answer some of few questions, and then if something is left out, then we can take up. suppose ID card is expired, then what? Of the officer. Sir, answer is given by him. Get lost, don't enter in my premises, you have no right to enter. Come Then he is a trespasser, sir. So I can take action against him. Not for chit chat and the music, no? Sir, entire circle got a permission, no? But सर करने ही नहीं देना ना. नहीं लेकिन उसमें क्या होगा वो ऑफिसर चला Set जाएगा. your house in order then. Once he goes out. Sir, it means he will check all the identity card of all the officers. Yes. And सर ने जो बताया दीपक भाई ने कि पर्सनल सर्च भी आपको लेना है. Officer also has to offer. In this case, he has not offered, and Manali has also not asked for that. So it is the responsibility of the SSC कि आप मेरे को पर्सनल सर्च लेना है. ये कंप्यूटर इनके नॉलेज के लिए वो आउटसाइडर इसको भी लेके आते हैं. There is no identity card. No, so they have a power. There is one section 153, where the CGST can appoint an expert, and जो forensic experts आते हैं वो सब उस power के अंदर आते हैं. They'll have their name also. उनका नाम होगा और उसके अलावा उनका पर्सनल आईडी होगा ना सर. अगर समझो उन्होंने एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट गौतम को लाया तो he may not have the government identity card, but he will have Aadhaar or something na कि he is the same person. And the officers are knowing the law or may not be knowing the law. But we may not be aware that how to then run that particular laptop or how to dig out information or how to go. Evaluation के लिए भी कई बार जाते हैं. Verification के लिए भी. Joins. When the residence is searched, then where one witness is located, two witnesses not required. So we'll cover that. Residence. Yeah. Friends, before I start, some of my observations I didn't find in the study circle. 10.5 साल हो गए हैं first lecture के and still feeling lonely over here. Now, very good observations by all our members. Very good observation of all members. We've been covering few aspects right from the start of the search. Remember ने बहुत rightly बताया था just एक टिक आई वो बोल दिया 10 करोड़ का रिकवरी है अगर search warrant पर sign कर दिया. Is this legal? And what is really required before the search warrant is issued? First and foremost thing, there has to be a reason to believe. Reason to believe or reason to suspect में बहुत बड़ा फर्क है. मेरे पास मुझे डाउट है इस पे सस्पेक्ट. Doubt backed with some corroborative evidence that could be reason to believe. That reason to believe should not have been just with me, but that reason to believe should be with the search authorizing officer, the joint commissioner, equivalent officer. मुझे reason to believe होगा, but unless and until the authorizing officer has the reason to believe, yes, a search is required. The person is engaged into tax evasion for which without a search ये नहीं निकल सकता है बाहर. Information बाहर नहीं आ सकती तब हो सकता है. अब ये reason to believe क्या आपने मन में रखेंगे? Will they keep it in their own mind? Okay, I'm happy. No, it has to be recorded in the internal files before the search warrant is issued. The reason to believe need not be disclosed on the search warrant
You may ask for the reason at the time of initiation of search, but the search team is not obliged to give you the reason at that time. अगर आपको दे देंगे, you might attempt to secret or keep it discreet. No reason to believe you can ask for in the court of law after the search is concluded. That yes, whether you had a proper reason to believe, let the court see and verify. I doubt that this search was absolutely authentic or not. आप ऑफिसर्स जेल में थे, बट आपके पास कोई रीजन नहीं था, फिशिंग एक्सपेक्टेशन के आ गए थे मेरे पास, और जो मिल गया वो आपने बाद में फाइल में डाल दिया है. सो ये कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, टैक्स पे को देने की जरूरत नहीं थी. Now, once that search warrant is issued, each and every officer's name has to be there on the search warrant. It cannot be that Deputy Director Deepak Thakkar along with his team, Deepak Thakkar along with two more persons, two of his subordinates can go. जिनका नाम लिखा हुआ है वो जा सकते हैं. अगर कोई बिना ऑथराइजेशन के आप आ रहा है, everyone has a phone, dial 100, call the police for trespass. ऑफिस में आपको बहुत कुछ करेंगे सर, लोगों के मन में डर रहेगा, घर पे पहुंच के वहां पर लेडीज क्या करेंगे. You have even bigger power. You don't even need to call the police. Shout at the top of your voice. अपने आप उल्टे पांव निकल जाएंगे. अगर वो जेन्युइन होंगे, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके एक लेडी ऑफिसर के साथ में आएंगे, आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जेन्युइन नहीं होंगे, you'll move back, and it has happened lot of places that a non-genuine team had come over there without a proper search warrant, without lady officer. घुसने के ट्राई कर रहे थे, lady literally didn't open the door, shouted, called from intercom the secretary and the chairman. पुलिस को फोन किया, जितना फोन किया वो भाग चुके थे. मालूम है ये सर्च वैलिड नहीं थी. So we have to exercise our powers. हम उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. पर्सनल सर्च अगर वो ऑफर नहीं भी कर, हम मांग सकते हैं. वो ऑफर करते ही है बाय डिफॉल्ट. लॉट ऑफ एसएससीज टू अवॉइड द ईगो इश्यूज रिफ्यूज की नहीं कर, ठीक है चलेगा. दैट इज अप टू यू वेदर यू एक्चुअली वांट टू सर्च और नॉट, बट दे हैव टू ऑफर एंड वी कैन डिमांड एज अ मैटर ऑफ राइट. नाउ वंस यू एंटर द प्रीमाइसेस, every 5 minutes there is a threat of arrest. उठा के अंदर डाल. Now let us understand arrest किस situation में हो सकता है. Interpretation issues, tax भरा नहीं भरा, ये हुआ वो. There are 4 specific situations under GST Act for which you can be arrested, and that too some subject to conditions. What are the 4 conditions or 4 situations? 1, you have made a supply of goods or services but not issued the invoice. Common parlance, black makeup. Second, you have issued the tax invoice but not made the supply of goods or services. Fake input tax issue, fake bill issue here. The third, you have taken input tax on basis of an invoice, but there was no underlying supply of goods or services. Fake ITC, जो हम common balance बोलते हैं. Fourth, you have charged and collected GST. Some customer charged and collected and failed to pay it for more than 3 months. In that case, you could be arrested. But for these 4 situations, for the arrest to happen, your tax demand needs to necessarily exceed 2 crores. Above 2 crores, below 5 crores, it's a bailable offense, non-cognizable. स्पेसिफिकली सर ने बोला था, आप स्पॉट पर कुछ किया था, इम्प्रॉम्प्टू अरेस्ट किया था सर को, कि मन में कोई आएगी. सर मैं आपको बेलेबल ऑफेंस अरेस्ट कर, सर मुझे बेल दे दो. बेल ऐसे नहीं, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, 4-6 घंटे के अंदर रहेंगे तभी भी वो. He will be detained for those 4 to 6 hours till the time bail bond is not secured. Above 5 crores, it becomes a non-bailable and cognizable offense, जिसके सामने बेल आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अप्लाई करनी पड़ेगी. Today's world, if you are accused of such economic offenses, 10 साल पहले बात अलग थी, आज के दिन में बेल मिलना मुश्किल हो गया है. एक बार कस्टोडियल वो इंटरोगेशन हो जाता है वहां पर.
सत्येंद्र जैन को नहीं मिला 6 महीने से 12 महीने से हमको क्या सर ही इज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन सर, यहाँ पर हम एक रेगुलर बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। उसको भी नहीं मिला पर्सन को नहीं मिला तो हमको सी जनरल पब्लिक इज जस्ट इसलिए certain persons are avoiding summons. Yes. They know that if they go there, yes they will be arrested. they'll not come back. So Very good. these are the very specific situations, like fake invoice, fake ITC, collected GST and failed to pay for more than 3 months, उस पे अरेस्ट हो सकते हैं। कोई भी इंटरप्रिटेशन, सर आपने पूछा था 18% 28% वाला, कितना भी डिमांड हो, 1000 करोड़ का हो सर, अरेस्ट नहीं हो सकते उसमें। आपने 18% कलेक्ट किया, 18% भर दिया है, अरेस्ट पावर्स नहीं है। जितने इनवॉइस दिए थे सबके साथ गुड्स दिया था या प्रॉपर परचेज है, अरेस्ट नहीं हो सकते। देयर हैज टू बी अ शो कॉज नोटिस। इफ यू वांट लाइव एग्जांपल सर, गेमिंग कंपनीज को आया ना, हजारों करोड़ों का नोटिस, डिमांड नोटिस आएगा, अरेस्ट नहीं हुए। बैंक अकाउंट अटैच होंगे, बहुत कुछ होगा, अरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज़ इंटरप्रिटेशन इशू है, अरेस्ट की पावर्स नहीं है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा बट अरेस्ट नहीं। Now, where you could be arrested under 193 of IPC. Once the summons is issued and the statement recording commences, it becomes a judicial proceeding. It need not be before a magistrate. We enter into the role of a judicial officer. And giving any false statement, misleading statement or such evidences is an offense. It's like giving a false statement before the court when you're standing in that kadgara. जो भी कहूंगा सच कहूंगा, literally वो होता है। And if you are convicted of that, there is 7-year jail, irrespective of the tax involvement. Transaction 50 लाख का था जिसके लिए गलत स्टेटमेंट दे दिया, but if the revenue goes to that extent, they could ask that he has given a false statement in judicial proceeding, jailing for 7 years. कोर्ट का ट्रायल होगा, सब कुछ होगा, बट प्रोविजन है 228 ऑफ आईपीसी वेरी स्पेसिफिकली। जब इंसल्ट करेंगे आप, इंटरप्ट करेंगे, बीच में बोलेंगे, आपको डाल देंगे, क्या होगा? 6 months jail और 1000 फाइन, अवेलेबल ऑफेंस, इतना ही। That is where the CFO is very tactfully trying and give the answers to his owner। जहां पर हम पढ़ते थे तो वो उसको 6 months की वो जेल की अवॉइड करेगा, सर सॉरी सर, शांत से करता हूं। Very tactfully handling all these things. This is how even if we as chartered accountants are permitted to be present at the time of statement or summons, शांति से प्यार से बोलो सर, उनको बताता हूँ क्या है, वो समझ नहीं पाए क्वेश्चंस, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस है, मैं उनको बताता आंसर दे देंगे, and they generally follow unless until आप unnecessarily बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, and they have a right to send you out. One person had asked the right to an advocate, call an advocate, I think. Yes. Sir, let point to the Advocate. advocate. I'm talking about something else. Like as you told, under CRPC as well as IPC, both the powers as given to the senior officer, whether it is permissible in the constitutional validity, because both are covered under the section as another certificates. They are covered. They are the powers. Like, even by the government, but like in coin, because if you coin CRPC, then only magistrate can issue the summons and all this. Police officer have a right to rate on. No, sir, section 70, when you read the section 70, it is treated as a judicial proceeding. So someone asked that what does, you mean by judicial proceeding? Section 70 categorically says that the proceedings under this section will be treated as a judicial proceeding, and both the sections are applicable. So in section 70, they have invoked the section 198 and 228 of IPC. But like both, like in IPC as well as CRPC, that is covered under different article of the constitution. Then, I agree. like in according to that article, like same person cannot invoke both the powers. So means issue the summons to the person. So practically, sir, GST में ये invoke हुआ नहीं है, but I'll tell you what will be the procedure. So 228 anyway, it's a 6-month jail. So below 3 years, all the offenses, generally all the offenses are bailable offenses. तो उसमें आपको immediate bail मिलेगी, you just have to pay the fine and surety. So interrupt करने के लिए there will be no jail. Technically, आप पे बाद में ट्रायल चला के and if it is found that you have actually interrupted, बाद में magistrate बोले कि आपको जेल होती है, then you can be held for trial and then prosecution can be launched.
On the other end, where there is a jail term of 7 years for giving a false statement, you can be arrested, no? And then you have to be produced before magistrate, and then it's magistrate choice whether they want to give a bail or not, because it will become a non-bailable offence then. So 193 Act, I think we need to check whether it is available or not available. Generally, you know, beyond 3 years. So the entire mechanism of CRPC is that below 3 years, everything is bailable. Above 3 years jail term, most of the things are non-bailable. So in case of bailable, bail is a right. You know, they have to give you the bail. There is no option. If they want to put you in the jail, they have to go to the magistrate and take arrest warrant. This is the process. In non-bailable, it's otherwise. You know, they can arrest you if they found it. They found it right. And it is you who have to approach to the magistrate and then take a bill. From a perspective of CRPC, anyway, there's a timeline. Someone asked कि सुबह 4 बजे arrest कर सकते हैं क्या? So there's a timeline that within the arrest of 24 hours, you have to be produced before the court. आपका medical होगा और आपको court के सामने, magistrate के सामने पेश करना mandatory है. So this is a different altogether law. If someone is arresting you at 4 o'clock and suppose they are producing at 10, next day at 10 o'clock, anyway it is beyond 24 hours, so it is an illegal detention. So मुंबई में हो भी चुका है कि on the basis of illegal detention they have they have arrested very reputed company, listed company. किसी को अभी recently हुआ है, 6 महीने पुराना केस है, I don't want to name. So 2 directors and एक CFO को arrest किया था, 3 लोगों को यहीं पे एंटीवेजन ने अरेस्ट किया था CGST ने, and they were arrested at 7 o'clock in the morning, and next day उन्होंने 10 बजे प्रेजेंट किया. They got an immediate bail on the basis of that it is an illegal detention, because 24 घंटे से ज्यादा आप इसको डिटेन नहीं कर सकते हो. In DRI also practically we have seen कि जब वो पहले दिन बुलाते हैं आपको एंड नेक्स्ट डे उनको प्रेजेंट करना होता है, समझिए 10 के पहले आपको बुलाया हुआ है या 12 के पहले बुलाया हुआ है, एंड दे फील प्रैक्टिकली कि 12 o'clock तक नेक्स्ट डे मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राइट है स्टेटमेंट, वो आपसे एक स्टेटमेंट लिखाते हैं कि यू राइट कि मेरे को यहाँ पे घर से जाने का कोई साधन अवेलेबल नहीं है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू गिव यू द फूड, आप मेरे लिए कुछ रहने का बंदोबस्त कर दो. नेक्स्ट डे जब वो स्टेटमेंट चालू करते हैं वो लिखवाते हैं कि मेरे को फूड मिला, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए जाने का आई डू नॉट हैव अ कार, तो इन्होंने मेरे लिए बेड अरेंज करके दिया. सो इस तरीके से वो लिखवाते हैं ताकि इलीगल डिटेंशन को प्रिवेंट किया जा सके. सो इलीगल डिटेंशन आल्सो है पर्सनल लिबर्टी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में आपको आता है थ्रू CRPC. सो इट्स दैट्स हाउ द इंटरप्ले ऑफ द प्रोविजंस विल वर्क. And as far as section 193 is concerned, 7 years का आपको जेल है, but it is a bailable offence. Same officer can give you a bail, or otherwise you can go to magistrate. So it is a bailable offence, even though if it is a 7 years. And it is said generally that bail is a matter of right, and jail is an exception. And that was the government has also issued in one instruction, in very exceptional case, you should go for arrest. It should not be your first priority. See, वो bail इसके लिए नहीं मिलती है सर 5 करोड़ के ऊपर, because they are proving that it is a fraud against society. See, the economic offence generally treated as a fraud against society, so that is the reason. और आप समझो from a magistrate perspective जो deal करता है 1000, 2000, 5000, 50,000 की चोरी के केसेस में, suddenly someone is going in saying 17 करोड़ का GST का एविजन है, 50 करोड़ का GST का एविजन है, 1000 करोड़ का फ्रॉड है. तो that's why taking a bail if the offence is so, I don't know, we do not have an official figure, but I think in most of the cases people are not getting bail where the offence is beyond 5 crore. Now it is different. Immediate bail 14 days में 60 days में मिलता है, that's a different story की चार्जशीट फाइल नहीं हो रहा है तो anyway there's a provision कि 60 दिन में तो आपको जुडिशियल कस्टडी से बाहर मिल जाता है, because officer are not able to file the charge sheet. So वो पूरा एक CRPC में चल रहा है. Then it is beyond GST. Yes, I'm done on the spot. What about other points? Advocate वाला. Yes. So right to an advocate, sir. You can call an advocate during your summons, but he has the right to be at a visible distance, not at an audible distance. वो सुन नहीं सकता है क्या हो रहा है, वो सिर्फ देख सकता है कि आपको जोर जबरदस्ती की जा रही है, कि आपको मारा जा रहा है क्या. That is all the right that he has. Your consent. He will be only at the visible distance, not the audible distance. That is important. He can't prompt, he can't give in action कि यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो. We can't prompt. जैसे CFO जैसे prompt कर रहा था,
कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है. That advocate can't do. So only for sitting, so he can be like a some kind of witness, you can say. Either CFO can make the next. Yes, CFO is a part of the organization. Consultant, advocate, and they are not part. CFO has the right to be in the audible distance. No, CFO can be part of the search, no? So he will not be audible because he is prompting, he is part of the search. That's what I said. During summons also, if the CFO is interrupting too much, I can take the owner to a separate location or ask the CFO to leave, go to a different. That's it. Yeah. So उस केस में ये होगा जो कुछ facts के questions इनको नहीं पता ये बोल दे मुझे नहीं पता. CFO है तो at least वो बता दे रहा है, we can record it. That is why the company's employees are generally permitted during the statement recording. ओनर को हर एक चीज नहीं पता होती है, उसको एम्प्लॉय बता सा हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये पब्लिक सप्लायर है, ये पार्टी है, ये तकलीफ है. Everything won't be known by the authority. So role of advocate and chartered accountants are same. Yeah. So it is up to the officer whether he will allow or not allow. And if he will allow that, it's only feasible. You cannot take the video from outside. वीडियोग्राफी तो वैसे भी अगर आपको लेना है तो आप बोल ही सकते हो. As a matter of right. 20,000 रुपए घंटा देके सीए को या एडवोकेट को बिठा के आप उसको बोलो तो वीडियोग्राफी कर तो बेटर है मैं आगे भी बोला. सम्मान से समय के वीडियो कॉपी कर सकते हैं, सम्मान से समय जब वो आपके स्टेटमेंट होता है, एट दैट टाइम कैन बी टेक टू वीडियो कॉपी. Yeah, already Supreme Court instruction आ चुके हैं. Every investigation agency needs to mandatorily have the recording facility while recording the statements. Implement नहीं हुआ अलग बात है. सीपीएसटी के संदर्भ बाहर रखा कि आप मोबाइल को आप सीज करो और बाहर के रखो, स्विच ऑफ करके रखो. बट आप इंसिस्ट कर सकते हो कि नहीं मैं उसके बिना नहीं दूंगा. इनका कहाँ पर दिखा आपको सीपीएसटी बारे में मोबाइल बाहर रखना है. ये पर नोटिस चाहिए वहां बाहर. हाँ हाँ वो that's a different reason sir वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इंटरेस्ट नहीं हो सकता फोन बजे तो. राइट फ्लोर मेंटेन अच्छा बाहर लिखा हुआ है. That's for a different reason. वो अभी रिसेंट में हुआ है, वो एक उसको दूसरा मैटर हुआ था इसके लिए हुआ है. So coming back, as a businessman, whenever you are signing a statement, read, understand carefully before signing. Officer can't insist कि आप 2 मिनट में पढ़ लो, 5 मिनट में पढ़ लो, हो गया ऐसा नहीं. So without reading and understanding, you should not sign. कोई भी रीजन से अगर आपका फोर्सफुली स्टेटमेंट ले लिया गया, so it is your duty immediately at the earliest opportunity you should reflect the statement in writing, giving the reasons and what are the wrong thing has been written in that statement. ऐसा नहीं है कि आपको आफ्टर टॉक 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आप जा रहे हो और फिर उसको बोलो कि मैं चेक करूंगा. So that should not happen. Statement and search both cannot be continued in odd hours. अगर मेरा ऑफिस टाइमिंग शाम को 7 बजे है या संडे शाम को 5 बजे, I can insist and I can say that now my office timings are over. You leave my premises and you can, if you want, you can come tomorrow morning again. In that scenario, they can seal the premises, entire premises, or maybe a particular part of the premises. And there they will keep all the record, all the document what they are looking for. So odd hours में नहीं हो सकता. शाम को 3 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे जो हम बात कर रहे थे, जो आपने ऑब्जर्व किया, that is not permissible as far as GST law is concerned. Like in income tax it is permitted to 3 days 4 days like that. Sir, इसके लिए तो आप you are expert. Everybody knows. Manish is expert on income tax. So that's why we said कि GST में it cannot. सर आजकल क्या होता है, जैसे ही वो आते हैं ना, आपका मोबाइल का डेटा परफेक्ट खींच लेते हैं. मेरा लिंक कर लेते हैं मोबाइल का, लैपटॉप का, सबका. फिर आप उसको लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है. और वैसे भी आपका कॉल ट्रैकिंग में डाल ही दिया है उसने. 512 स्टोरेज हो गया है, क्या क्या चेक करेगी. और उसके अलावा क्या है सर कि आजकल तो ऐसा है कि मोबाइल लेके जा रहे हो तो आप उसके रडार में, अदरवाइज आप किधर चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा. तो ही मोर देन हैप्पी टू टेक योर मोबाइल अराउंड यू, तो ही कैन ट्रैक यू फ्री फ्रॉम द रेडियस. तो आप खुश हो रहे हो कि मैं उसके रडार में नहीं हूं, बट आप
So, statement next is someone जो भी आपको issue हुआ है उस पे दिन is mandatory. So आप उसको दिन को चेक कर सकते हैं because काफी कुछ boys आपको GST has not implemented it yet. SGST ने अभी तक implement नहीं किया है. This is only for CGST. But दिन होना जरूरी है. अभी शुरू किया है यूज करना बट कोई कंपल्सन नहीं है. और और दिन आप चेक कर लो. कई बार ये भी सिलेक्टर्स हुए हैं कि वो बोलते हैं मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर है ही नहीं. आप जब दिन साइट पे डालते हो तो पता चलता है कि ऐसा दिन ही नहीं है. देयर इज फ्रॉम टेम्परेचर ये दिन नहीं दिख रहा. So immediately you will either upload the din. It will be genuine from CBSE. Search दिन. Online website. Online website. आप Google पर कीजिए search in CBSE. e-sancha.cbse की वेबसाइट है सर, वहाँ पर मिल जाता है. How you verify dean of chartered accountants? इससे हर चीज अवेलेबल है साइट पे. और एक इनकम टैक्स में रिसेंटली एक जजमेंट लिया सुप्रीम कोर्ट का इन केस ऑफ ब्रांडिक्स मॉरिशस लिमिटेड. इफ दिन इज मिसिंग इन असेसमेंट ऑर्डर मे बी एन irregularity but does not make it illegal. So वो भी एक हमको ध्यान में रखना है कि this is very important judgment can be applicable to GST also. So you can't say कि भी दिन नहीं है तो invalid हो गई है क्या search. But it is for your safety to insist for that. किसी भी पर्सन को, एल्डरली पर्सन को, फीमेल को या ओनर को, CFO को, किसी को भी देता है स्टॉप फ्रॉम टेकिंग एनी मेडिसिन और फूड ऑन टाइम. बेचारे को इसके लिए पैसा इतना गुस्सा आ गया कि खाना नहीं दिया. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नोस दैट ही हैज अ राइट टू एंड टेक मेडिसिन. So and actual figures ही and सर्च का जो पर्पस है डिपार्टमेंट का, हमेशा सर्च का पर्पस यही होता है to find out the fact, not to go into the legality, not to go into the difference of opinion. So आपने देखा होगा कि during the search इन्होंने 5.5 करोड़ का मेरा अंडर वैल्यूएशन का इशू निकाला. I was not ready. Then इन्होंने CSR का या ITC का 4 और 6 करोड़ के वो इशू निकाले. But again, interpretational issue. I was not ready. But as Sumit has said that 4 kind of scenarios. If demand is tax due is more than 5 crore, then they have a power to arrest. Then you should be worried. And fact जो भी आप दे रहे हो, वो आपके fact बिल्कुल सही होने चाहिए. और whenever you are accepting, जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया कि CFO ने कहा कि मैंने 5.5 करोड़ का DRC 03 फंड दिया है, ITC रिवर्स कर दिया. तो पहली बात है कि you can make a payment through ITC reversal or maybe through a cash payment. It is one and the same. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. फिर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उसने बोला कि तो ये बोला कि नहीं इसको हम 5.5 करोड़ के सामने एडजस्ट कर देंगे अंडर वैल्यूएशन पे. Then he said नहीं सर मैंने उसमें इनवॉइस नंबर वगैरह डाला है. Then he said कि okay you will have no issue but you will inform to the income tax department. Income tax we have a provision that if the value of the invoice, I think Dheeraj has told that if the value is 100 crore, then the penalty under the income tax law will be of 100 crore plus tax plus interest. So GST you have an issue of only 10 crore, income tax you have a bigger issue. So do not accept that this is a fake ITC, fake purchase. Because यहाँ तो आप फिर भी बच जाओगे, अरे शायद ना हो, but income tax will be a bigger issue. So before accepting anything, you should take not only the advice of GST consultant, but my advice आपको लेना चाहिए. I am not promoting anyone, but this in our play we have used his name. That's why I am using his name.
So, I think, yes, you want to say something? Yeah, I think more or less not everything is covered. Fake entry आपने बोल ही दिया. The second, अच्छा एक चीज I just wanted to think JB Nagar. I started my journey from here. My first lecture was वो आपका जो study group होता था sir. So मैं सुमित सब यहीं से this is the first lecture. सर मैंने भी सबसे पहला लेक्चर देवीनगर में ही दिया था. So अभी हम जाके काफी जगह जाके बोल पा रहे हो गए आज तक. So कई बार क्या होता है जो आप इतनी मेहनत करते हैं ना यू डू नॉट रियलाइज कि कितने लोगों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट है. मतलब वी हैव बीन गिवन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर टू स्पीक. आई स्टिल रिमेंबर डेल्टी फ्लेक्सी में 2013 तो हाँ जो वहाँ पे सबवे के पास में डायरेक्ट तो वहाँ पे I have given my first lecture. Thank you so much, sir. That's the one of the reasons Jhunj is always close to my heart. So thank you so much. I would like you next. आज ज्यादा बोल तो एक वो है. वो जो गुस्सा था वो स्टडी सर्कल पे तो नहीं था ना. सर ये स्टडी सर्कल में से बने कोई भी सब्जेक्ट में बोलना है तो दे कैन गिव देयर सब्जेक्ट कोर ग्रुप में आना है जिसको स्टार्ट करना है. As two boys were standing over there, please stand over there, clap them. There's a team. Nobody else was there from the core group of 48 people. So people are invited. जिनको आगे बढ़ना है, आगे जाके डिप्टी कन्वीनर बनना है, they can also apply. Thank you. Yes, with the giving their profile. So core committee भेजना तो पड़ेगा वो. Fake entry, Manish has already discussed that there is a new provision which have a revocation. कई बार क्या होता है सच में practically जो वो closer होता है ना तो बोल रहे हैं अच्छा इतना accept कर लो तो फिर हम आपको जानने देंगे. So you have to be very careful what you are accepting, what words you are writing. So that has been rightly pointed out. One thing is that he made an argument कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट का judgment है, आप तो महाराष्ट्र में बैठे हो. So generally there is a principle that if it is a central law, then central law is applicable across India. So if there is an any high court judgment relating to a central law, then it will be applicable across India till the time there is a contrary judgment of the jurisdictional high court. So सरपासी के Supreme Court का बहुत अच्छा judgment भी है on this particular thing. So definitely if there is no contrary judgment, I can use the Karnataka High Court judgment and it is applicable to my case as well if the facts are same. I think questions. Maybe there is one question: number of summons. How many summons I can someone is asked. So technically there are 3 summons. Beyond 3 summons, authority has a right to write to the for further action, and then this summon will become a judicial warrant. So if you do not appear in 3 summons, or if you do not send someone, then they can definitely do that. What can be asked in summon? It has been specified in section 70 कि वो सारे कोई third party summon में सारी details मांग सकता है क्या मेरे ITC की. So it has to be specific. They have said that they can call for the document. Generally it is for the where the presence of a particular person is required to report the statement, give evidence or report. So generally third party summon में बहुत सारी other दूसरी details नहीं मांगी जाती है. They need to issue a separate summon. Can as a chartered accountant, can I appear, before him if someone is given? See, if the someone is in the name of company, then company can authorize anyone to represent before the authorities. If someone is in the name of a particular person, that person himself has to go and represent the case or have to give a statement. That is on the book and represent in case of some. CA and advocate can Chartered accountant that person. So whether a chartered accountant can accompany that person or not, that we have already discussed that he can be a visible distance if because it is a fact finding. They are not asking you any legal questions. The summon, see, summons में generally अगर वो कुछ पूछ रहे हैं कि इस पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, that is not, that should not be the questions of the summon. Summon will always be a fact finding. The questions will always be on facts. So facts तो जो businessman जानता है उससे अच्छा और कोई जानता नहीं है. Like chartered accountant, advocate अपन भी नहीं जानते. So the some questions are never on facts. It's better that the person or the person who is handling or managing those things, he gives the answer. So technically you can accompany depending on the officer whether he is allowing you or not. He has a right to send you outside and say, make you sit outside and record the statement.
you can be at a visible distance. So always keep in mind that the person will be suffer. And maybe personal hearing at the time of reply to super, time of super notice or maybe commissioner of it. There the authorized representative is allowed because you are going to argue on a legal matter. But at the time of summon, at the time of search, the prime objective is only and only to find the fact, not to conclude the proceeding there and there only. So it is not expected also that advocate or chartered accountant or consultant should be there. Yes, yes. So like, maybe, as, you said that fake invoices, etc. don't accept, in case if there's a problem. Because there will be a bigger problem under income tax. So that is what I am recommending. Yeah, recommending, if it's a fact, maybe, but there's a cover from officer, there's no fake invoice, but officer says it's a fake invoice. So, to prevent arrest or something, then we make payment under protest, so that even this issue is sorted out, and even the income tax issue is not there. That I have made the payment under protest, but I'm not accepting that it is there, so neither are you caught over here, nor are you caught over there. Write a letter saying that to buy a piece, I am making a payment, but my transaction is genuine, and my transaction is genuine, this is as a document and this as a receipt. So when we file DRC3, is there any option for making such a payment, or just we have to convey to later? Make payment. There is a column others. There are 3-4 columns, 75 voluntary, 74 against this your suppression. There is a column others. And in the remarks, we mentioned very specifically payment under protest. Maybe you can write towards that alleged issues and whatever reversal of ITC under protest and all those things. And write in the letter that this payment I have done only to buy peace of mind without accepting the charges or allegation against me. Thank you, Mas. I just have one point here. See, searches of the premises. So at one location, because the warrant we mentioned the address that are going to the search. So at that premises, you might be having group companies. The one of the question which was raised. So at that location, if they got books of accounts or documents of other companies, they can give immediate search warrant for those as well. And then they are coming for A limited, but the search can be done for BCD, whatever documents available at that premises. So that you need to, highlight your clients to avoid, or maybe you can just bifurcate the area for each company to avoid these issues. Technically. Yeah. Yeah, but not to. But for that, different company, different search warrant is required from the joint commission before we get down. Sir, they But क्या होता है सर वो फोन कर देगा बोले सर आ ही रहना मैं आप उसको रोक नहीं प्रैक्टिकली आई एम सेइंग let us give an example, sir. इस रूम में 4 कंपनीज का ऑफिस है. अंदर तो उसने मुझे राइट मिल गया कंपनी ए के नाम पे. अब ये पेपर्स किस कंपनी के वेरीफाई करने के मुझे चेक तो करने का राइट है. सीजर वो डॉक्यूमेंट बी कंपनी का सीज नहीं कर पाऊंगा. सर्च तो मैं प्रोवाइड तो कर रहा हूँ. सर्च के उनको कुछ मिल गया, फोन किया, मंगाया, अब इसको भी सीज कर दूंगा. Yes, Yes, sir. सर्च warrant किसी से लेना पड़ेगा. And if they don't follow the criteria of witness or something, then we should take search. There is no witnesses. There is any technical argument can be done before property. So you can challenge the entire validity of search. Any search, sir. Anyone, sir. Witness is compulsory. Yeah. Without witness search पंचनामा नहीं बनेगा सर विदाउट कंसेंट. पंचिंग है ना सर वो अगर विटनेस बनाना भूल गए, वो लास्ट में तो रियलाइज हुआ, वो आपके रिसेप्शनिस्ट आपके ऑफिस बॉय को विटनेस बना देंगे, मतलब आप ही का आदमी तो है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन आपको होगा आपको. बट यू कैन इंसिस्ट सर. Someone Bunch has to be there during the entire proceeding in training till end. ठीक है. कई बार ये भी देखा जाए तो लास्ट में किसी को पकड़ के लाता है. Then you should raise them. Sir, in one of my client case, we have got the summon in which we have accepted the liability of common credit and we have reversed that as common credit. And along with that, we are also ready to pay the interest. The officer is saying to pay the penalty as well under section 73. Whether his contingency is correct.
73 में बने बोल रहे सर. Or any other, is there any other section for penalties? There are a lot of sections under GST. For summon as well? Huh? In case of summon? So it could be. So give us take a simple case. You have reversed the ITC and the paid the interest. You have paid a delayed payment. So they could charge a penalty under 73. If they have done all these reversals pursuant to their initial action, they could make it a case of attempt to evade taxes and put a case under 70 for a higher penalty. That means penalty will be there. Penalty will be there under 73 is a very minimal penalty, and that if you pay the tax interest with a certain period, the penalty can be waived off altogether. Okay. Yes, sir. 73 penalty का only 10%. 74 then it can go up to 100. तो अच्छा है अगर 73 में करवा लो ना. Regarding illegal search, see, under income tax, there are some judgments. Even evidence collected in the under illegal search can be used against the assessment. In the same position in GST. Yes, so photo flow में more or less it's the same position, but photo flow में test with more detail. No provision under GST prohibiting the evidence. It will have to go to the evidence act. In that case, even evidences are collected illegally or assessing it to the same situation. नहीं, but time barring तो है ना सर. उसका judgment है illegal search हो गया तो time barring तो होता है ना चीजों का. 70 देख लो issue again show cause notice under section 74 उसकी 5 साल की time barring तो है. Within time barring, Time barring तो सर anyway he can fall for the flash. Security person. No, sir, no. नहीं, अगर उसके पास सर्च वारंट है बायोमेट्रिक्स से बहुत जगह ऑफिस में एंट्री है या मेरे से देखने के बाद में वो एंट्री आ रहा होगा. सर्च सिक्योरिटी वाले उसको रोक नहीं सकता है अगर उसके पास प्रॉपर सर्च वारंट नहीं. देखो वी कैन कम्युनिकेट जब कोई आ रहा है वो ठीक है ना अंदर ही जा रहा है. सर कम्युनिकेट का हमने रिसेप्शन में किया था. बात हो जाएगी. बट उससे जो बंगाली क्या हो रहा है उस तरह से जो मान लो आर्ट निकालते हैं सर 5-6 ऑफिसर्स होते हैं ना तो पहले ही ऐसे ही आते हैं डराते हुए धमकाते हुए आते हैं. सिक्योरिटी वाला जाते हैं ऑफिसर का सुनेगा अगर उसको मालूम पड़ गया तो तो सर होता है ना फोन तो आपको आ ही जाता है ना फोन उधर होने के बाद भी. कंप्यूटर आर्टिस्ट वगैरह चेंज करता देखिए सिक्योरिटी पर्सन की सीसीटीवी देख लेता है आदमी. सर ये बात के है ना नंबर भी डिलीट कर दिया था. सर हमारे सर इन केस व्हाट हैपन है जैसे कंपनी का जो नीचे बिल्डिंग होती है बिल्डिंग में भी आजकल एक्सेस होता है करेक्ट. तो आप जा नहीं सकते तो दे केम विद द पुलिस एंड पुलिस वाले ने बोला इसको खोलो. उसने नहीं खोला बिल्डिंग में अंदर घुसने के लिए. they jump that road and they so they are all paid for that. So बात नहीं हो सकते. they invoice अगर related with the delivery or for example there is a provision of taking advance and delivery is afterward only and is that a breaking or not? No, then it is not. Because there is a practice in many companies that they prepare bill in advance. अगर आपने 30 मार्च को बिल बना दिया और आपका डिस्पैच 2 अप्रैल को हो रहा है there is delivery then it is not delivery maybe after 3 months or 2 months there may be So apart from export, I don't think so there is a outer timeline. Export के cases में 96B says that आपको from the date of invoice within 3 months you have to dispatch the goods. Wherever you have filed an undertaking, 96A में was specified a timeline. Apart from that, section 31 of CGST says that on or before delivery you have to raise the invoice. So before delivery आपको invoice raise करना है. Invoice की कितने दिन में delivery करनी है वो as such I don't see any outer timeline. Export के केस में जहाँ पे आप LUT फाइल किया और वहाँ पे there's a 3 months outer timeline कि 3 महीने में आपको goods dispatch करना है. Apart from that there is no outer timeline in GST for domestic transaction. So you have not received the goods and that is no issue of the fake ITC. You can't take ITC. Seller side तो ये हुआ. For recipient side you must have not availed ITC only. they have to issue bill so that they can block the fund for the goods. So that is the practice. नहीं आप सर वही बोल रहे हैं कि आप इनवॉइस इशू कर सकते हो पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनवॉइस इशू कर करके आपने दे दिया और सामने वाले ने उसका क्रेडिट भी ले लिया. ITC ले भी नहीं सकेगा because he is not received. Section 6 पर्पस कोई सर्व नहीं होता है. It will be a fake ITC case. They are getting the bill also and they are paying the taxes also. They are not in profit.
But they are not eligible to claim the ITC. जब तक मार्क्स कुछ नहीं नहीं हुआ है है गवर्नमेंट को. So government revenue safe है. Revenue मिल गया, ITC नहीं जा रहा. Only thing is that he cannot issue tax invoice. He can issue advance. So no, he can issue tax invoice. tax. Sir, law says on or before delivery. So before delivery का कोई timeline नहीं है. Outer timeline नहीं लिखा हुआ नहीं है. Sir, मेरी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल सर आरटीएस ऑर्डर आता है बोलते हैं एडवांस करो और यार आप माल कब भेजोगे तो माल पैक करके रेडी है बिल भेज दो पेमेंट को तुम्हारा डिस्पैच होगा अब वो डिस्पैच होने के पहले सर्च हो गया और इनवॉइस इशू तो बोलेगा आपने माल तो भेजा नहीं but you can show that against this invoice the goods are there with me which I am intending to send Delivery terms. या आपके इनवॉइस पे जो डिलीवरी टर्म्स है वो पेंडिंग रहेगा सर उसको व्हीकल नंबर नहीं आया होगा ये बिल आपने नहीं बनाया होगा दैट इज हाउ कैन प्रूव कि ये फेक इनवॉइस का केस नहीं है आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन डिलीवरी स्टिल पेंडिंग ये पार्टी में भेजा है फंड्स ब्लॉक करने के लिए डिलीवरी पेंडिंग लिखा है उसमें मैंने वह विषय ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई आपने इनवॉइस बनाया ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई आपका माल पड़ा है तो ठीक है ना आपके पास माल भी पड़ा है ना Yeah, my question is, what's the time limit? Suppose the source is taken to a customer and department is taken all the documents. Now, what's the time limit in which they will complete and give time of the document? Also, no, they have recommended way. There is no mandatory time. there is no mandatory upper time limit recommended fee is there but वो तो क्या है sir recommended fee is always so they will ultimately the conclusion of search will happen through either section 73 or 74. Those section, right? So they have a timeline to issue show cause notices. So अगर 17-18 का सर्च है तो 73 का नोटिस होगा तो अभी तक वो टाइम बार हो गया and 74 will get time bar. So that is the one of the outer time which you can presume because ultimately 73-74 is the only conclusion. and in case of search if show cause notice has been issued then definitely it will be 74 only not 73 Yeah. because the relation is like that then 5 years 5 years from the due date of the और सर्च कंक्लूड हो जाती है बट शो कॉज नोटिस का जो टाइम पीरियड अवेलेबल है अंडर द लॉ दैट इज अवेलेबल बेस्ड ऑन दैट सर्च whatever he has to say now he speak by show cause notice then all implications process. So what about all login ID, password, bank, Gmail? Dheeraj will answer that. नहीं आता. Sir, cannot take this. तो मैंने तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी मांग लिया था जीएसटी का पासवर्ड भी आपका राइट है कि आप देना है कि नहीं देना है. So we can deny all the password. You cannot deny. You can decide. we are asking not demanding we are asking So you are refused. We have refused. Nothing. Sir, thank you for asking this question. कब से मैंने अपनी गलती को मान. 9 टाइम से गलती नहीं मान रहा है. Again, one of question is, can officer pressurize witness? We cannot. Without witness, we cannot start our proceeding. So, at his mercy, we are here. इसको नहीं लगा था. नहीं बोला खाना खिलाओ. Sir, in the beginning, खाना खाने. sir, in the beginning, if there are no witness, can you enter the premises? नहीं we will along with witnessing Without witness, you can't enter. मतलब पर्पस सब नहीं होगा सर भेजा अभी क्या कर रहे हैं? भेजा प्रैक्टिकली नहीं इन्होंने भेजा जनरली हमारे क्लाइंट के क्या नहीं भेजते तो दूसरे को बोल रहा था सर वो नहीं एंटर नहीं वो आपको ही बोलते हैं सर आपका विटनेस दे दो फिर मेरा लाना वो We'll refuse that. करेगा वो करेगा. we don't we will refuse. सर आप पूछेंगे तो Can we check the movement of goods that is happening to Parivar side and past trades? हाँ सर पूरा डेटा अवेलेबल है आप लोग चेक नहीं कर सकते आप परिवहन पे ये नंबर चेक कर सकते हैं आपका जो भी ईमेल का नंबर है वो डेटा अवेलेबल सर वो आप जो व्हीकल है ना व्हीकल नंबर डाल के आप ये देख सकते हो कि वेटर की कैपेसिटी क्या है बट जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये भी एक्सेस है जैसे उन्होंने बोला कि आप वोटर का कहीं भी कर सकते हैं. सर वो पूरा है ऐसा इंडिया का मैप आता है इफ यू पुट ईवे बिल नंबर पर इट विल शो कि यहाँ से चालू हुआ यहाँ गया कितने टोल उसने कितने बजे क्रॉस किए और ये व्हीकल कहाँ पे था सो दे कैन ट्रैक एवरीथिंग दे हैव ऑल द डेटा Artificial intelligence is sealed by the investigating team. Then office premises is sealed by the investigating team and can put up a notice or copy of the summons on the premises for visible.
Can the office premises be seized? See, if it is a continuous search, so obviously अगर मैं next day आ रहा हूँ तो I need to put a seal कि वो जैसे मेरे को documents थे कोई पीछे से उसमें छेड़खानी दिख रही evidence मेरे as it is right. So when I leave for the premises and if it is a continuing search, obviously I'll seal the either the premises or a one room or two room of the premises where all the documents will be kept and the next day at office hours I'll open the seal and I'll proceed for the search from officer perspective. Someone अगर आप accept नहीं कर रहे हो, ठीक है, when the someone can be tested. So एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, अगर आप वहाँ पे कोई है, अगर कोई accept नहीं कर रहा, तो obviously as a officer, the officer has no choice rather than to paste it on the premises. So वो जो आपका official address है, वहाँ पे paste करके आ जाएंगे, क्योंकि हमने someone दिया है, लेकिन ये deliver नहीं हो रहा है, आदमी accept नहीं कर रहा है, so they can paste it on it. Yes, sir. कंप्लेंट पे सर्च इनिशिएट हो सकता See, search will be undertaken by the department with some targets. 2 crore, 3 crore, 4 crore, 1 crore, 5 crore. For say 100, 200 rupees, nobody will go. If you recall about that anti-profit ring for that burger, tax rate was changed. And that company, well-known burger supplier, he did not change the price. He kept the same price, or rather he increased 1 or 2 rupees also. So that was then taken as an anti-profiteering measure, and the matter went up to the courts also. And recovery also happened. So, but for petty things, no officer will go to anybody's place. I'll give you a specific answer, sir. Section 67 जो आपका है. What is section 67? Search can be done where a taxable person has suppressed tax transaction between supplier goods or services or both, or the stock of goods in hand, or has claimed excess ITC in excess of the entitlement, or has indulged in contravention of any provisions or rules by thereafter with intention to evade taxes. आपने कोई ट्रांजैक्शन सप्रेस किया है, एंटी प्रॉफिटिंग केस को ट्रांजैक्शन सप्रेस किया नहीं किया, स्टॉक सप्रेस किया नहीं किया, एक्सेस आईटीसी लिया है आपने जो आपका एलिजिबिलिटी है नहीं लिया है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया यस, बट इज इट डन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस? नो. So in that case search will not, that is why search will not. Huh? सर्च इनवैलिड होके भी आपके अल्टीमेट एंटी प्रॉफिट प्रोविजन लगा के पेनल्टी लगाएंगे वो. पेनल्टी बिना सर्च के भी लगा सकते हैं, आपको समझ दे के भी लगा सकते हैं. उनका इंटेंशन क्या है? एंटी प्रॉफिटिंग का आपसे टैक्स लेना है, पेनल्टी देनी है ना. सर्च करके आपको अंदर जेल में तो डालना नहीं है, जेल तो होनी नहीं है सब 4 केसेस में. Can be even after the moment of No. And goods are sent for approval and all. That's what Gautam has said, that you can issue invoice prior to the moment of goods, not after. सेल ऑन अप्रूवल एंड ऑल वो 6 महीने के अंदर के जो प्रोविजन से स्पेसिफिक केसेस है जो सेल ऑन अप्रूवल हो सकते हैं वहां पे मिलते हैं. Right, friends, thank you very much on behalf of my entire team. I'm thanking you for very much. Thank you.
I think we all had a very eventful Sunday morning, very academically enriching. And I'm very grateful and thankful to this full panel of GST experts who have left no stones unturned in taking on this topic of mock GST search. My thanks to all the speakers, CA Manish, CA Deepak Thakkar, CA Sumit, CA Gautam Raj, CA Vijay Doshi, CA Dheeraj. They have exceptionally meticulously planned this skit. Execution was excellent. And then the summarization of all the important provisions with the discussion amongst all the members. Thank you, all of you, for taking the specific queries for the participants. I would also like to thank our coordinators today who have helped in the excellent execution of the event. And last but not the least, a thank you to all the participants who were present and made this interactive and wonderful session. Before we conclude, we also want to thank Manali Gadia, Rahul Daga, and then Jhunj who have joined. Gadia for actually offering water. So thanks to all of you. And of course, thanks to all the participants. Thank you. Just an update for the upcoming events. We have a event planned on TDS, where we are planning to invite a few officers from the TDS department, Commissioner of TDS, and Jayesh Rai, if you can elaborate on that. Right. The date is not yet fixed. It will be either 14th or 21st, and sir will elaborate on that. So one question can I ask? I'll just start with the announcement. Friends, TDS compliance is getting lot of problems for day-to-day practice. Lot of problems we could not solve on our own. We thought it appropriate to invite officials from the department who will initially give us the session on Tracy's site and give their inputs. And they are going to be with us to resolve our question answers. So we request all the members, whatever problems you are facing, just send across. We can compile the questions and send them in advance, and we get our appropriate answers. But avoid specific individual issues with more details. Please ask the questions related to the principles. Thank you. I will issue a Google form regarding that. I will issue a Google form regarding the same. You can send in your queries in the form. Thank you. Thank you all. Yeah, I'm a lucky draw also, sir. Chitlangia is there. Yeah. Membership number 149898. 149898. Not there. Anybody for signing? Yeah, next one. Vishwanath Pai. Vishwanath Pai. Vishwanath Pai. आइए बाप देखो देर का फल सबर का फल अच्छा है नेक्स्ट वन
आप ही बोलिए। रामदयाल रामदयाल जी अरे यार। चलिए, फोटो ले, फोटो इधर है, फोटो आ गया ना? हाँ। इधर क्यों उनका ये हाथ में हाँ। बाकी लोगों को नेक्स्ट टाइम मिले। सब लोग तो ठंडा हो जाएगा। लगेगा कभी भी होपफुल 25 लाख आपका जो 5 किलो करना पड़ेगा।